ASSOCHAM GEM Green Building Certification Program. So, first of all, I'll take 10-15 minutes and will brief you the overall aspects of green building certification. Then I would request Rohit Kumarji, who is from NKing International. He'll be talking on carbon footprinting. Then I will request Shubha to talk on the technical aspects of GEM Green Building Certification Program and how this is implemented in the projects. And then I would request Kaushal also to share his experience on energy, daylighting, and fresh air. So next 2 hours are going to be very interesting, very exciting. So thank you so much for joining in such a big number. Thank you so much once again. Now I'll be giving my presentation. Allow me a minute, please. Rohit, please give me the presenter right. Thank you, Rohit. So friends, thank you so much once again. And I am pretty much sure that many of you must have attended this training program earlier also. तो फ्रेंड्स आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम एसोचैम जैम ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल हर महीने के आखिरी सैटरडे में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं. So this program is being organized in last Saturday of every month and this program is absolutely free for everybody. ये प्रोग्राम सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है. इसमें हम आपको जेम सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग देते हैं कि क्या ये प्रोग्राम है, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन कैसे होता है, कैसे वी कैन इम्प्लीमेंट दिस ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन द बिल्डिंग्स, and how you can become a GEM certified professional, how you can engage you with such green building certification programs, how you can make money out of these programs. So and all these. So friends, GEM is basically the green building certification program of ASSOCHAM. Under this program we certify the buildings and built environment as green rated. तो इस प्रोग्राम में we try to save energy, water, waste, increasing the daylight, fresh air, increasing the human comfort in the building. So we guide the buildings and developers to make their buildings energy efficient, water efficient, proper daylight and fresh air, and proper waste management in the buildings. So these are all broader pictures. So friends, ASSOCHAM is basically the India's oldest apex chamber. We are industry association and there are around 400 chambers, industry associations, trade associations associated with us. We have around 450,000 direct and indirect members across the country. We have around 80 plus councils over various subjects and ASSOCHAM GEM Green Building Council is one of them. So friends, GEM is basically the green initiative of ASSOCHAM. And we have various different reference guides, different programs for different types of building, whether it is a new building, factory building, existing building, campus, educational institutions, warehousing, logistic, hotel, hospital, healthcare, warehouse, railway stations. We will show you some examples, good examples of ASSOCHAM GEM certified green rated projects. And as mentioned, this is India's first indigenous green certification program. Just a minute. It is India's first indigenous green building certification program, and it is applicable for all residential, office, factory, logistic parks, educational, industrial campus, health facilities, hotel, warehouse, and all types of buildings, whether it is new or existing. And it covers sustainability, energy and water efficiency, fire and life safety, greener area, daylight, indoor air quality, fresh air, human comfort. So friends, there are multiple benefits. There are other green building certification program also. So what is the need of a new program, GEM certification? So friends, this program was started in 2017 around. And this is the India's first program which is based upon the ECBC, Bureau of Energy Efficiency's ECBC 2017 codes and NBC 2016 codes. And this is the first program which talks about fire and life safety also. So what we have done is we have correlated fire and life safety with the sustainable and green buildings. So it has given double advantages to the green buildings. And also this program is based upon the latest guidelines of ECBC and NBC. So what does it mean? What is the benefit of this? Iska benefit ye hai that if your building is GEM certified, it means that it is an ECBC compliant building. In many states, ECBC is going to be mandatory in some time. So if your building is GEM certified, it means that your building is ECBC compliant. And vice versa, if your building is ECBC compliant, it means it's a GEM certified building. And friends, this program is
although this program is based upon the indigenous reference guides, but this program covers many aspects of United Nations SDGs 2030. So there are many aspects which are already covered in ASSOCHAM GEM Green Building Certification Program. Like if you talk about human comfort, good health and well-being, affordable and clean energy, renewable energy, industrial innovation, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, clean water and sanitation, water management, waste management, and life on the land. So there are many aspects which are already covered with the GEM certification. It's not only the indigenous program, as well as cover the UN SDGs also. And friends, we were lucky enough to participate in COP26 this year. So the team from ASSOCHAM and GEM visited the COP26. We organized some conferences and webinars at COP on sustainability. These are some points which are given by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji during COP26. You all know, and these all points are related to sustainable buildings and sustainable building designs. So these are certain rating levels. So as you achieve BEE star rating for your electronic equipments, certain other ratings for your buildings, these are GEM 1 to GEM 5 level ratings for your buildings. GEM 5 is the highest one and GEM 1 is the lowest one. So if your project achieves 105 points, it will be GEM 5 rated. And my friend Shubha will explain you that how the projects can achieve more and more points in his presentation. These are certain benefits of green building certification. So friends, there is a myth that if a building is going for green building certification, it will increase the cost of the project. It's not like that. In fact, if you are designing a building properly at the very initial stage, at the design stage, it will not only decrease the cost, but your building will be very energy water efficient. Proper waste management will be there, proper daylight and fresh air will be there. So it can reduce your fresh water demand up to 30%. It can optimize your energy consumption up to 20-25%. It is the comparison with the international standards and application for awards. Proper waste management will be there, carbon footprint assessment and report, and carbon neutral certification is also there. My friend Rohit will discuss about carbon footprinting today. And we also do capacity building of the staff as well. These are certain GEM advantages, as I already covered. If you are going for ASSOCHAM GEM certification, green building certification, the cost of your project will increase by rupees 8 to 10 per square feet, which is a negligible amount. If you are going to buy a flat in a simple apartment, it will cost you around 5,000 rupees per square feet. Around, it's a minimal cost. So if it is 5,000 rupees a square feet, or if it is a 5,010 rupees a square feet, it will hardly matters. But you will get a sustainable energy, water and waste efficient green building. Payback period is even less than 4 to 5 years. And the program is based upon ECBC 17 and BC 16, as I already told you. And there will be a big recognition by industry's century-old Apex Industry Chamber ASSOCHAM. We have this much of footprint across the nation. So we have GEM regional chapters, regional councils, regional committees in around 10 states, including Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Chhattisgarh, Jharkhand, and all those West Bengal. And we are about to launch our chapters in other states as well. And when I'm saying chapter or committee, it means that there are architects, engineers, professionals associated with us, developers, industrialists associated with us in these chapters, and they are implementing GEM certification program in their projects. I'm just showcasing an example with you. So ASSOCHAM GEM Green Building Certification Program is empaneled with Rajasthan Building Bylaws for free extra FAR incentives for green buildings. So friends, many state governments are extending the incentives to the green buildings. And this is one example with you. ASSOCHAM GEM Green Building Certification Program is already there in Maharashtra, Himachal, Gujarat, Kerala and other states. Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha is yet to come. So if your building is ASSOCHAM GEM certified, you will get extra FAR incentives for free of cost. So it is an added advantage for the developers, builders who are developing buildings in such states, green buildings in such states. So you can, this will help you in market and pitch you GEM certification program in various projects. So this program is also, appreciated by CRISIL,
CRISIL has included GEM as well in their certification programs along with other rating programs. These are certain GEM certified projects. I mean, it has all types of projects, whether it is university, hotel, hospital, even railway stations, airports. There are reputed airports and railway stations. I'll share with you some examples, and you'll be surprised to see that these all are ASSOCHAM GEM certified. So you must have heard Rani Kamlapati railway station, Habibganj railway station, if you are from MP, Madhya Pradesh. So this project is GEM 5 certified by ASSOCHAM GEM Green Building Council. And this is the picture of the railway station. You can see the GEM plaque and certificate placed at the railway station main entry. This was recently inaugurated by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and our Railway Minister Shri Ashwin Kumar ji. This project is ASSOCHAM GEM certified. This is the photograph of the railway station. If you can recognize, if you are from MP or if you have traveled to MP ever, it's in Bhopal. Again, this is a wonderful railway station project at Gandhinagar, Gujarat. This was again inaugurated by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. This is the picture of 5-star luxury Leela Hotel over and above the Gandhinagar railway station. So below is the railway station and above is the 5-star luxury Leela Hotel. If you have ever been to Gandhinagar, you must have seen this railway station. This is again ASSOCHAM GEM 5 certified railway station, inaugurated by Honorable Prime Minister. These are the answer. This is the excellent example. This is the Kartarpur corridor. This is again certified by ASSOCHAM GEM Council. These are certain examples. Healthcare buildings, commercial offices, universities, schools, hotel, hospital, warehouse, land port. So this is Kartarpur corridor land port. You can see at the right side bottom. These are office buildings, cinema hall, commercial buildings, commercial malls. And friends, we have signed MOUs also with various reputed technical associations, technical organizations, agencies, starting with the CSIR, NEERI, you must have heard. IIA, if you are an architect, you must have heard IIA, NAREDCO, FSAI, Fire and Security Association, TAIR Policy Center, ISLE Lighting Association, GACS, ASHRAE, you must have heard, Solar Society, Indian Air Quality Association, and Smart Habitat Foundation. So these are very reputed organizations from their respective sectors, and now they are associated with the ASSOCHAM GEM Green Building Council, and they are with us promoting this GEM Green Building Certification program. Friends, we have associated various universities also, and our aim is to educate our young professionals, architects, engineers, and our faculties on green building certification program. Like today also, many architects, professionals, students from various universities are attending this program. We have signed around 100 plus MOUs with various reputed universities across the nation, and they are also participating in GEM certification program, and we are educating them on sustainability aspects. This is the benefit of going green. So if you are from educational institutions, if you are from universities, educational institutions, architectural colleges or various other colleges, and if your campus goes for ASSOCHAM GEM Green Building Certification, you get more and more points in NEC accreditation. So this is the advantage if your institution is going for GEM certification. There are various benefits for various sectors. Like I shared with you that the project will get FAR incentives. So this benefit is for developers, industrialists, and others. And this is the advantage for the education institutions going for NEC accreditation. These are the universities associated with us. These are from all states of the country and very reputed universities. MET, you can see MIET, and various others universities in the list. So this is the certificate. So friends, let me take 2-3 minutes, and I'm just going to finish my presentation. So friends, this is the GEM Certified Professional examination. This is the online examination. Anybody can register for this examination and can take the examination online. This is an online examination. So say for example, if you are registering for this examination today, you can register and you can take the examination anytime in future.
You can take the examination from your home, from your office, from your institute, anywhere. This is an open book examination, online examination, and for architectural students, engineering students, and professionals. So they can take the examination and they can become the GEM certified professional. Now, what is the advantage of becoming a GEM certified professional? So, friends, if you are a GEM certified professional, now you are entitled to execute the ASSOCHAM GEM projects across the country. It's kind of a license, it's kind of a certificate for you to execute ASSOCHAM GEM certification program for all kinds of projects across the country. So, if you are a professional, you can go for GEM certified professional examination, you can take the certificate, and then you will be authorized to execute the projects anywhere. So, this will be an added advantage to your career, added advantage to your profession. And more than 1800 professionals have taken the examination. They have become GEM certified professionals in last 2 years. So the number is quite good, and we have professionals in all the states now. uh, we have conducted around 130 plus webinars, many registrations, many attendees. We have 10 chapters, 14 MOUs, and 89 MOUs with universities, as I mentioned in my presentation. Just to share with you, we conduct the International Sustainability Conclave Expo and Awards every year in the month of January, something like that. So this year we were lucky that we could conduct this Mega Expo and Award physically at India Habitat Center, New Delhi. We conduct, so various architects, professionals, industrialists participated in the program. It was all 3 days physical program at India Habitat Center, and many reputed organizations like Ministry of Environment, Ministry of Housing and Urban, Council of Architecture, NERIDCO, NBT, they all participated and supported us for this international conclave. These are some glimpses of the conclave. We were lucky that we could able to conduct this in December 2021. उसके बाद तो there was COVID, and so these are some services we provide: water audit, waste audit, energy audit, net zero, carbon, training on sustainability. So we provide trainings also on sustainability to various corporates. And this is the last slide. So friends, this was the message given by Honorable Prime Minister when he visited ASSOCHAM's 100th century program at Vigyan Bhavan. So let's all pledge to create a green and environment friendly sustainable country. So thank you so much, friends. Thank you so much. And this is the last slide of my presentation. Just a minute. So I think I have received certain questions in the question and answer box. So friends, what we'll do is let's invite our next speakers, and at the end we will do this question answer session, and we will answer all your queries. So, but before that, I would request you to please register for ASSOCHAM GEM Certified Professional Examination today. We have very discounted fee today. If you are registering for the GEM Certified Professional Examination today, we have a discounted fee. Tomorrow onwards, this fee will increase. So if you're interested, you can register for the GEM Certified Professional Examination today only, and you can take the examination anytime in future. So thank you so much once again. Rohit, I would request you to please present the slide for the next speaker, who is Mr. Rohit Kumar. Rohit Kumar is the Vice President, Enking International. Welcome, Rohit ji. Thank you, Neeraj, and thank you for giving us an opportunity to be part of this initiative. It's a great initiative, and I think this will be our. Thank you. Please allow me to read your brief introduction. Yeah. Thank you so much. Thank you. So, friends, Rohit ji is armed with 20 years of experience in marketing, government relationship, media management, environment, and sustainability, mega campaign program across the platform, research and alliances. He has been at the forefront of various high-value programs, launches in more than 20 states through various B2B, B2C, and B2G marketing and communication initiatives, resulting in creating better value for stakeholders and brand. Currently, he is working in Enking International, EKI Energy, listed in BSE, as Vice President, Marketing and Sales, Government Business Media Management, and responsible for overall B2G and B2G marketing activities for the organization at the PAN level. So friends, Rohit ji has wonderful experience, and it's a
opportunity for us that he has joined us today, and he'll be sharing his views. So you can ask as many as questions from him. So thank you so much. Over to you, Rohit ji. Thank you, Neeraj ji, and thank you, Amit, for giving us the opportunity. So I will just share my presentation. Yeah. Yeah, hope you're able to see this presentation. Yes, sir. Great. So thank you, Neeraj ji, and thank you, Amit. You already got the brief that I'm working in Inking International right now. And this is the world, one of the largest carbon credit and carbon offset management company. So I'll just go to the slide that what is the carbon market? The overall objective of this presentation is what is the carbon market and how the carbon market can be the good carrier, or how it is important for all the sectors and all the industry. What is carbon credit? What is the carbon credit standards globally, what we have? And what are the processes, and how it will benefit, not only give the recognition to the projects, but also it will also give the uh, financial benefits to the organization who is working in this direction. Yeah. So regarding EKI, we have a large experience as a company, because such market is really growing around the world. So we have done a lot of renewable, 2,500 clients we are working right now for across the sector, starting from renewable energy to energy efficiency projects, to agriculture sector projects, to electric vehicle. All those projects are actually helping environment to be more greener, or you can say that stopping the climate change. So we'll just go to the next slide. So everybody must be aware about the climate change and the global warming, I think. And you can have a lot of news regarding that. Everything is linked in our life regarding climate change. So we can see the weather change pattern in Delhi also. January is the coldest month now. So everywhere, and then even in Europe, last year was the year where the in London the temperature was the highest ever so far. So entire the world is, everybody is really concerned about the climate change, because it's linked to everything in our life, starting from our crop, starting from our health, and starting from impacting the livelihood, economy of the country. Some countries are really completely dependent upon, if climate change will happen, their economy will spoil around the world. Some islands will merge in the sea. So a lot of issues are there around the world. So finally, we are happy that all the countries in the world sitting together and discussing about how these issues or crises can be resolved by mutually agreed terms and conditions. So we know that what is climate change. I will just go to the quickly brief about the climate change. So climate change is really caused by oceanic processes and variation in the solar radiation received by Earth, and also volcanic eruptions and human induced alterations on the natural world. So what is climate change? And because climate change actually raise the temperature, raise the sea level, and also more frequent weather related disasters, like sometimes pose risk on the agriculture, food and water supply, and many more. So this slide will really help to understand that a lot of human induced alterations can be resolved by us, because these human induced alterations actually causing a lot of issues, and actually disturbing the cycle of the earth, or the nature, mother nature. So what happened that all the country, I will just go to the, yeah, so this is a good slide. So what happened that every country in the world has impacting in this crisis. So UNFCCC actually is a United Nations Framework Convention, and culture change has been established. And the purpose of the establishment of this UN Nations Framework Convention was to discuss about how we can actually stop the climate change and reducing the greenhouse gas, or stabilizing the greenhouse gas, because greenhouse gas is the major problem creator for increasing the temperature of the earth. So it actually was effective on 1994,
when the first meeting has been happened so far, and a framework has been created. Then after that, 2005, again, there is a meeting happened, the Kyoto Protocol. And the Kyoto Protocol was again, there was an international treaty by most of the countries based on 1992 United Nations Framework, UNFCCC. So it is a next level program happened in the world where every country has decided that they have to reduce the CO2 emission. And hence they have developed some of the mechanism. So the first mechanism has come, which is CDM, which is Clean Development Mechanism by UNFCCC. And that mechanism has actually active in the global market to measure how we are going to be the carbon neutral and how those projects can be, sustainable projects can be supported by developed country to developing countries. Then after Kyoto Protocol in 2016, there is a Paris meeting happened. So these are important meetings happen in the global compliance market, or to minimize the climate change impact of the climate change, or reducing the greenhouse gas. So again, in that treaty, there was two articles. Has been actually there's a legal articles. You can also read about these articles 6.2 and 6.4, which really talks about how all the nation will work together and towards and support each other in terms of technology, or in terms of giving the additional fund in the form of carbon credit, and help to minimize the climate change and reducing the emission of greenhouse gas. So regarding global compliance market, there's a lot of standard has been developed. And these standards are like CDM. We have discussed about CDM is Clean Development Mechanism developed by UNFCCC. And after that, VCS mechanism is a voluntary carbon market, is actually developed by US. Then GS is a global standard by Switzerland, and GCC also global standard council. So there are many more compliance market have been developed, and these market actually really certified. Like Neeraj was telling about greenhouse and green building and the waste management. So all those processes need to be certified in the global compliance market, and there's a lot of terms and conditions and parameters which we have to meet. Then we will able to eligible for getting the carbon credit, and hence getting the recognitions and additional financial support. So these are the global market happen, and so if you see the complete global cycle, so you can see that how every year the world is really concerned about to be net zero emission and climate resilience. So what happened? The entire world has been working together in this direction, and they have decided that 2050 is the year where entire world will be the carbon net zero emission. Means whatever you are emitting as a country, as a nation, you have to compensate by doing the sustainable work. So what are those sustainable work? We'll discuss later in the coming slide. So every country is working in the net zero direction. So they whatever emission they are doing, they have to compensate it, so that they will not cause any problem for the climate change and all. And India has decided that India will do 2070 is the year where India will reach to the net zero emission, and India is really working in this direction. So we'll discuss about this in the coming slide. Yeah. So these are the COP26 recently happened, which Neeraj was telling that what happened to COP26, where entire global leader was there. So the objective of COP26, which happened in the Glasgow, to secure net zero by mid-century. Because if you're not able to work in securing the net zero, the climate change will really spoil entire world, and it will increase large number of poverty and health concern. And it will also, if you secure it, it will also protect the communities and natural habitats. And all those COP26, we also discuss about how to finance the sustainable projects, or the projects to the developing countries is working, because developing countries has not industrialized so far, while the countries like US and UK, or some of the developed country, they have done the industrialization in 1700. So developing countries is really asking that they need really support, because so developed country has really come together and joined hand to developing countries and supporting in terms of technology and giving the additional financial support to the sustainable projects. So, but in that COP26, everybody has decided that they have to work together, and that is really good news for all of us. And they are mutually working to finalize the rules, policy,
and every nation is working on NDC. NDC is the nationally determined contributions, which every country is deciding what are the important area they are focusing on to reduce the carbon emission. And every 5 years, they have to share the action plan to the United Nations, and and they have to do some corrections if it's required. So everything is really organized, and it's a great news for all of us that we are really serious about stopping the climate change. So why these slides? These slides are really important to know about. This everything is linked to the carbon credit actually. So what are the climate policy and changing the business environment? So this is a really important slide because all the climate policy changing in the world might impacting to the business. So we have to be very careful. And if you're coming up with a plan, or if you're doing some investment in the technology right now, or so we have to be very aware that what is happening in the global climate compliance market. So these are some of the things, important things which are happening. So there are many more, but I'd like to mention that there's some things that are really important to, like CBAM is a carbon border adjustment mechanism. This is really initiated in some of the European Union countries. So this mechanism is stopping the trade. In case your product is not carbon neutral, you cannot trade in those countries. So it is really going to impact a lot of industries and companies. They have to be the neutral. Else, after certain years, if such policies will come to the world, the entire business might hamper. Another area is that power. So everybody has to shifting towards renewable energy because coal is the largest emitter for uh, greenhouse gas and CO2. And this is increasing the energy cost also. So we have to understand that whatever we are paying to energy right now, it might increase the cost a little bit more. So are we ready for this? We have to see. Then another area is that automotive sector. So automotive sector, that zero emission vehicles is coming to on the road. So it is really changing the entire uh, automobile sector or entire sector towards reducing the carbon emissions. So everybody is going to migrate from fossil fuel vehicle to electric vehicle or some other vehicles, which is going to reduce. So this is going to happen. The transition is coming 10 years is going to happen. And another area is that shipping and aviation, because shipping and aviation is also one of the largest polluter. So there's the inclusion of ETC, that is emission trading scheme. So these companies are buying carbon credit now, so to compensate their carbon emissions. The another area is most important area, which is agriculture. So we are aware that everybody is going to focus about sustainable land use. Everybody is really focusing about organic farming, and again, this is going to change the world. And I'm sure that in the coming 10 years, everybody will think about what organic food is and all, because it is really impacting to our health. So these are some of the initiatives in states, but all these sectors are largely impacting the other sectors as well. So climate policy, everybody has to be careful that what is going to happen in the world, and we have to think 10 years ahead and 20 years ahead in terms of deciding our business, in terms of doing any investments, in terms of technology, manpower. So now let's come to the Indian perspective, what India has decided, and how it is going to actually, the government is working seriously towards in this direction. So as the government of India has decided to increase the share of fossil fuel to 40% to total electricity generation. So right now it's 60% fossil fuel we have. So we have to reduce those things, energy from the coal, and increase the non-fossil fuel, which is regarding 40% we are targeting, like hydro energy, renewable energy, wind energy. So we are targeting that if there's 100 electricity we require, 40 will be the new and renewable energy electricity. We are also targeting in 2030 to reduce the emission of intensity of economy by 30-35%. So what are the emission we are doing? We are targeting to reduce 30 to 35% emission by 2030 to compare to 2005 level. So a lot of initiatives, like Delhi government has started electric buses. So every state government is working in this direction. So now we have to create additional carbon sink, 2.5 to 3 billion tons. So it will only happen, carbon sinking can only happen
through more forest and green cover. So there are two ways actually we can reduce the carbon emission or reduce the greenhouse gas. One is about forestations and all, which actually suck or sink the carbon dioxide from the nature, which is already there. And second is adopting the new technology or renewable energy and green energy, which is not emitting the more carbon dioxide. So there are two ways we can do it, and I think India is really working in both the ways. And we have a body called Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and they are the governing body for entire operations. They are working very dedicatedly in these directions and coming with the policies and also planning to promote about how we have to be sustainable, how we have to be green, how we have to do the protect the biodiversity, forest, wildlife. So a lot of activities are already happening in this currently, and it will increase many more fold in coming years. So now let's come to the very important point, like what carbon asset management is. So before that, I will just go through this slide, that why we need carbon credit. What is going to happen when we go to the carbon credit, or we'll say as a company or as an organization or as an individual that we are carbon neutral, because it really helping us to be uh, about how to be the sustainable. So if you are in this planet, or if you are working in this world, if you are here, so we have to be think that are we a sustainable citizen of the planet Earth, whatever we are doing, or a sustainable company, or a sustainable nation. So it really gives the recognition. Actually, if you are a carbon neutral, you are a green citizen, or you are a green company, and it really gives the pride as an organization. And also the another important point, it really helps us to get the additional revenue in forms of carbon credit. So there are two benefits if you're working in this direction. We are getting recognition, as well as we are getting additional financial support. So what is carbon credit actually? So it's a very common word which everybody knows. So carbon credit is really simple, that if we'll reduce the 1 ton of carbon dioxide, we'll get 1 credit. So if 5 credits, if we talk about we get 5 credits, means we have reducing the 5 ton of carbon dioxide. So these we calculate through proper audit and understanding about the projects. So now let's come to what is the carbon asset management, why it is required for every company or every organization in coming years. So it really helps us. So we have discussed that it really helps us to get the carbon credit, and so I will discuss the next complete process in the next slide, so it will really help to know. So we have discussed about one carbon credit is 1 ton of carbon dioxide emission and removal. And this carbon credit is also tradable. So we can do trades, and we can generate business, we can get additional fund, and also we can reduce the emission in the atmosphere. So both the benefits we can get as organizations. So this is a very important slide to understand the complete what is carbon offset life cycle. So you can see this. You can see the slide. The point number 1, that first every organization and companies are individual. So they have to they are working in the reducing the carbon credit. So 1 ton of carbon dioxide reduction is 1 credit, and then it also get the emission reduction certificate from the international mechanism or organization. And after getting the certificate, the proper evaluation, after proper evaluation, we really get the carbon assurance, carbon credit, how much carbon credit we are getting. And after getting the carbon credit, the organization and companies are purchasing those credits to be the carbon neutral. So this is the cycle, complete life cycle, which is happening around the world. So first we have to understand the project, we have to generate the credit, then we have to buy the credit. So some companies which is not carbon neutral, they buy credits. Some companies which have excess carbon credit, they sell credit. So these are the things that are happening in the world, most of the projects. So these are the carbon project life cycle. So this we have already discussed about this. So first we have to understand that what project design. I will give you the example for ASSOCHAM projects. I suppose waste management projects are there. So how the project design. So when we visualize any projects, so it really comes in the mind that if you're going to generate the credit, if you would like to be sustainable, which we have to do in the coming years, we must do. So our design should be based on that.
So what kind of products, what kind of equipments we are buying, what is the mechanism we are using. Then after designing the project, we do project validation. So after project validations, if project is really viable to get the carbon credit, we do it. We do registration of these projects in some of the international mechanism. Then after doing registration, the monitoring happens, and after monitoring, the verification happens, and then we get the credit. And after getting the credit, we do the trading. So we sell credit to the companies which is willing to buy those credits and becoming the carbon neutral. So these are the project complete carbon project life cycle is. So there is a great opportunity in these areas, and this sector is really growing very fast. And we are happy to say that the EKI Energy is right now working in this domain very dedicatedly, serving a lot of clients around the world, more than 20 countries, and we also become one of the unicorn because this is need of the hour, and this sector might really be helping you to come forward and also giving a lot of employments in coming years. So this is a very simple slide that how carbon trading works. So we generate the credit, and the greenhouse gases are credit. Why we get the credit? To reducing the greenhouse gases, and after that we sell the credit. Yeah. So I think there's some alignment issue in the slide. So what are the projects which we can get the credit? This is really important to know. So these are some of them. So we'll discuss one of them. Renewable energy, all the renewable energy projects might get the credit. And some like project renewable energy, which everybody knows about: solar, wind, hydro, biomass, biogas, solar water heaters, and all. Energy efficiency projects also get some credits, which is like LED lighting, like some process enhancement. Suppose steel industry is there or cement industry is there, they're enhancing the process and helping to save energy. So that might get the credit. And waste heat recovery, it is really happening in the steel plants or you can the cement industry. So those heat and recovery is also helping to save energy. Some boilers or some so these are the energy efficiency projects, and some projects are the nature-based solutions, which is really important. And this really most of the countries are working in this direction. These are like forestry, sustainable agriculture, and blue carbon means all the mangroves planting, because India has 70% of coastal lands. So a lot of mangroves are there, and it not only help us to give the carbon, help us to reducing the green house gas, but also it's really helping the biodiversity. And another projects are like community-based project like cook stove distributions, which is actually reducing immediate reduction of the carbon credit by using less wood for making foods and all. And waste management projects is everywhere. We are happy to say that we are the first company and to working directly with the Indore Smart City. And we have generated enough fund for the Indore Smart City by after generating the carbon credit, which is around 8.5 crore in 2 years' time. So these are the big money which all those companies can get. And I think the world is really competitive nowadays because of COVID and all. So all those small money might help to increase the profitability of some of these projects. I think one project we have missed here, which is electric vehicles. So this is also generating good credit, like Delhi Metro or all the Metro DMRC projects, metro projects. So these are projects which is completely replacing the fossil vehicles to the metros. So they are getting enough credit and generating enough money right now. So so what are these projects actually? And these are some of the projects example and how much credit they get. Like biomethanization projects get 210 credit per ton TPD. Compost project gets the 215 credit. Waste management projects can get the credit. Metro transportation can get. Forestry projects, electric vehicle projects, efficiency lighting, energy efficiency projects, renewable power projects, solar water heater, solar rooftop, cook stove projects, plastic collection and recycling project in VCS mechanism. So there are many more projects can get the credit. We just need to understand those project viability, and after that, proper research and understanding, we have to take the approval from the international mechanism.
So what we generally do, or what a company like us generally do, we actually do end-to-end solutions. So these are the different steps when you go for the carbon credit. Step one is, of course, project participations. We have to participate. We have to understand, and we have to identify the projects. Then we have to do the project implementation, project operations. So stage two talks about all the documentations of the project as per the international mechanism, as per the for the validations of the project. And stage three talks about stage three talks about the proper audit of the project, and stage four talks about finding the buyer and selling the credit. So all these step one, two, three, four is a complete life cycle to generate carbon credit. It really takes around 1 year time, and it really needs a lot of uh, engineers, environmental engineers has to play a very important role. Auditors has to play a very important role, and also the international buyers and traders has to. So we'll discuss about the complete uh, process. This is a carbon market supply chain is going to happen in coming years. So how is going to impact multiple stakeholders? So the equipment manufacturer has to as well in these directions, so that we can say that companies like solar cell manufacturers and wind turbine manufacturers, all those companies are really growing. Their market share is increasing because they are one of the most important stakeholders for carbon market. Then we understand that seller of the credit. So uh, like Renew Power and all those companies are generating credits. They are the seller actually because they have excess credit. So they can sell it to the companies which is required to buying the credit. Then the project developer and advisory organizations like us, we develop all the projects and give the complete end-to-end solution. Then the third party inspections like auditors and all. So they audit it, they validate the project. Then another important role comes to the countries and the countries organizations because they are the policymakers like MOE, FCC. Then the standard and regulatory bodies which actually validate and verify the projects, which is like CDM, VCS, GS. Then the traders comes who sell the credit after buying the credit. Then the seller and aggregator, which really accelerate the process. Then buyer and aggregator, so they support the process. Then buyer of the credit, then NGOs who helps the rural area project implementations. Because like if you discuss about the cook store projects, is we are distributing a large number of cook store to the remote area or area village near to the forest. So in those areas, we really taking help from the NGOs to execute in the ground zero. Then registry operators, then exchange of trading exchanges, and finally some of the investors are also coming in this area who is pumping the money because it really helping those CSR or sustainable projects to be more viable and more aggressive. Then media also plays very important role to publicity and promotions. And finally, multilateral bodies like World Bank and ADB, which really helping those things to accelerate in the world and also funding some of the projects. So these are the complete supply chain stakeholders. And in the carbon market, there are many more stakeholders, but these are the important ones. So, so now it's a very important slide to understand what is the carbon standard actually. We realize that a lot of carbon standards in the world. So first is that CDM is the Clean Development Mechanism. It's run by UNFCCC. So it has a registration cost, it has assurance cost. So what we see that which projects lies under which standard as an expert or a consulting organization. So there's a VC standard which is from US, approved by United Nations, USA, United States of America. So there's a standard called GSCER from Switzerland. So these are the multiple standards. So what we do, we actually see the projects and understand that where this project should lie, because every standard has different rule and regulations. So these are other important areas that we must be discussing or heard about Article 6 in the compliance and quality market. So in Article 6, there's a lot of changes are happening in the world. So what we have to be very careful that in case our project is CDM, PA and PUA.
So we need to transfer those projects to get the more carbon credit revenue. So a lot of happening in the world, so we have to very open our eyes, so those projects can get the maximum return. So I'm giving you some of the example that these are the example we have done for Southern State. So where all we can do the emission reduction projects like nature-based solutions and community development projects and municipal solid waste. So this example will really help you to understand that what are things can happen in each sector. So nature-based solution we have already discussed about if we'll do the forestations, afforestations or reforestations, we can get the credit. And so again, these are the process that we have to do registers. We have to understand that how much hectare the land where the forest is, how much hectare the land where you are doing the reforestations. Accordingly, we have to do the audit, and we need to identify that how much carbon credit those area can generate. And some of the nature-based projects can get the credit for 20 years. So it really help. It might help most of the farmers. It might help to increasing the farmers' income if you are sustainable and if you are doing a lot of forestations or reforestation. So these are the cook stove projects which we discuss, that how these projects are actually is a great help for reducing the greenhouse gas. It really helps to 30 to 40% energy efficiency compared to if you go for wood, it will emit 100%. If you go for cook stove, it will only emit 60 to 70% greenhouse gas. So these cook stove are really helping, and a lot of projects are happening in African nations or Indian developing countries near the forest area and generating good carbon credit. So some of the companies are also focusing on CSR in this domain and working dedicatedly to distributing these cook stoves. Waste management is really very important area where we reduce the methane. Methane is also a greenhouse gas. So if you reduce the methane emission, we'll get the good credit. So how will reduce the emission? By waste to compost and also waste to aerobic treatment of the waste and landfill gases. So all these projects will really help to get the credit. Another area which is really going very fast in terms of getting credit is waste management to reduce the methane emission through animal waste to biogas. So this is a very emerging area. So a lot of projects are going to happen in coming years to multiple cities. Government is planning to do a lot of biogas plants, and starting from Amul, starting from Banas Dairy. So all those biogas plants is going to get good credit in coming years. So most of the companies are really working in this direction right now. So we are happy to share that all the renewable company, green company, multinational companies are really focusing about in these directions, and they're very serious to get the recognition as well as to get the carbon credit. Government of India is also really serious, and they are also working in this direction dedicatedly. I'm also giving you one of the example regarding the one project which is happening in the waste management side, which is Indore Smart City. We must be aware that Indore is the greenest city and getting award every year. So this project is also helping Indore Smart City to be more sustainable, and because they have a lot of multiple solid waste, they're doing 600-ton multiple solid waste to compost every day. Sorry. Then biomethanization 20-ton every day, and in one area which is like Choitram, Mandi, Indore. Another area is that another area in Indore which is 15 tons per day, and regional park in Indore which is 15 tons per day, and solar PV also, which is 101 megawatt in Indore. So all these projects are, there are many more projects which is generating, actually reducing the carbon greenhouse gas. Hence, Indore is getting around 8.5 crore every 2 years as a carbon credit. So how it's going to benefit to the city? That city is in the top 4 cities, beat 96 cities. So it really helping us to not only getting the credit but recognition, getting more investment, getting more eyeballs, building the image of the town, building the image of the states. So how those carbon credits and is really going to help the city or the company in the larger perspective we'd like to share. And these are the plans of Indore and all. So these are the slides I thought I will share with you in case you have any questions.
So I'm happy to address. Thank you so much, Rohit ji. It was really, really very, knowledgeable presentation, I must say. We have received certain questions in the chat box. I think we should take these questions right now. Uh, so, Rohit ji, one question is from Vivek Mewada. So, this is his views that, how active is the carbon credit market currently? Yeah, It was highly active around 2010 2013, but not heard nowadays. So एक तो शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट का मार्केट कितना एक्टिव है. ये तो हम सभी जानते हैं कि दिस कार्बन क्रेडिट मार्केट इज वेरी न्यू टू एवरी कंट्री, एवरी पीपल. correct. इसमें अपॉर्चुनिटीज के बारे में यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एक तो ये क्वेश्चन है. दूसरा, एक कार्बन क्रेडिट की क्या वैल्यू होती है? ये वैल्यू शेयर्स की तरह कम ज्यादा होती है? कैसे ट्रेड करते हैं? सर्टिफिकेट्स कौन Right. इशू करता है? कैसे हम परचेज कर सकते हैं? तो ये सब, आई थिंक ये सब क्वेश्चंस हैं जो हमने चैट बॉक्स में मिले हैं. सो इफ यू कैन आंसर दीस क्वेश्चंस, Right. इट वुड Thank बी you. ग्रेट Thank you, जी. Neeraj ji. जी. And so carbon credit market is really growing very fast. So if you imagine that 10 years ahead, 10 years back, so if the market was around 50 cent, so today the market is around $3 to $7. So it is really understanding that what carbon credit market has grown, and I am sure that it will grow further because every companies are really serious. The companies which is not which is the biggest emitter in the carbon domain, which is like fossil fuel companies, which is like airline company. Some countries like completely industrialized, but there are countries like small countries like South Korea, like Taiwan, which doesn't have the forest land, but they are really industrialized. They don't want to lose their GDP. So what they're doing, they are buying the carbon credit from the other countries. Like South Korea is buying the carbon credit from Sri Lanka because Sri Lanka has the excess carbon credit. So this really helping those countries, those economy to develop further. And it really, because everybody needs the carbon credit now. And if you like to be sustainable, if you like to do trade around the world, if you're not the carbon neutral product, you cannot trade, or you might trade less. So this market has to grow further, and we can see the result that 10 years time, this market has fold, increasing every year. And now the next question comes that what is the carbon credit value is all about. So it really depends upon the project-wise project cost. So we discuss about there are two projects. One project is the sucking the carbon dioxide from nature, which is the forestation project. And so those projects are green projects, we can say. So those projects really we can get the higher price in the market. But again, how the price comes actually, what is the price? So there is no such a stock market or trade market like scenario. The price completely depends upon the demand and supply. So I'm happy to share that recently we have tied up with one of the leading global companies, a Fortune 500 company like Shell, fossil fuel company from Netherlands. So such companies in the fossil fuel domain, they're really required to be the carbon neutral. Otherwise, they're not able to trade in certain years' time. So what these companies are doing, they're collaborating with the countries like India, like us, and it was a good deal and a $1.6 billion deal, where these we have to generate the carbon credit for those companies so that they have to be carbon neutral and they can trade. So again, so this is the demand side. So such demand, if such demand comes in the market, the price increases. So the green projects prices might be $5 to $10 per credit, but again, it depends upon the demand side. So some airlines, so every airlines need to be the carbon neutral. Else they will not fly to the European nations and some other countries after certain years time. So there's a good demand in the airline sector. Now the other question comes around other projects which is not emitting the carbon dioxide or reducing the emission of carbon dioxide, which is like renewable energy projects, which is like electric vehicles, which is like waste management projects. So those projects prices might vary around $2 to $4 scenario. And third, the price
the projects like energy efficiency projects. These prices are a little less, like around less than $1 scenario, because those steel plants, most of the steel plants is coming running from the coal energy. But what happened that these mechanisms are also supporting those projects, which is helping to reduce the emission, reduce the energy, or which is helping to reduce the energy side from the plants by adopting some green processes, like some heats generated by boiler. Those heats, the heat generated by the plant can increase to water heating. So all those projects are sustainable projects, but the prices are a little less. It's around $1, because all those all those steel plants and all need to be revisited, because we cannot we cannot stop the steel plant, we cannot stop the cement industry, but we can motivate them to get the green practices, to buy some sustainable machines, or to buy some technology to reduce the emission. So these are the basic understanding. But some projects also is very good, doing the good carbon credit, like cook store projects, like community development projects, and they are like a $4 to $5 credits. So, but again, there is no such market rates available for these things. It completely depends upon demand and supply side. Yeah, Neeraj. Ji, thank you so much. So there are certain other questions, and I'll take two, three questions, and then we will switch to the next speaker. Uh, the question is, what is CO2 equivalent for a tree, and does it vary based on size or age of the tree? It's a very Yeah, common question we are receiving. And how active is the carbon credit market currently? You have already answered, I think. Uh, yeah. are Enkin carbon credit certificates recognized by USGBC? And what cost per certificate along with validity? I think you have answered this question also partly. And Yeah. also, electric vehicle will reduce the carbon emission, but electricity generation leads to emission. Will it solve any problem? And also एक क्वेश्चन और है वो ये कि कंपनीज के लिए अभी कोई लीगल बाइंडिंग है? जैसे अभी सेबी ने भी कुछ अनाउंसमेंट किया था कि कंपनीज को जो सेबी में लिस्टेड है उनको दे हैव टू गो फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी, और दे हैव टू डू दिस कार्बन फुटप्रिंट एनालिसिस। तो ऐसा कोई लीगल बाइंडिंग है, या ये सभी अभी वॉलंटरी मार्केट है और एट विल है? देखिए नीरज जी, थैंक यू। दो तीन क्वेश्चन था। एक तो लीगल बाइंडिंग की बात कर रहे हैं। सो आइडिया ये है कि लीगल बाइंडिंग अभी कंपलसरी नहीं है, बट दिस इज गोइंग टू हैपन इन कमिंग 5 years, बिकॉज व्हाट हैपन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वहां पे प्रेजेंट करना है ग्लोबली कि हाउ सीरियस वी आर इन, and how much India is working in this direction. So it will only happen when we'll do the legal binding, because all those data need to be present there, that how much carbon emission we are reducing the carbon emission, how much forestation we are doing, how countries really serious about reducing the emission. So legal bindings आना ही है, अभी अभी compulsory नहीं है, but all the important companies are already doing in this direction, because they know that it will come any day. So companies like and the companies which is working in the land of the land, they can only get the credit. Like Honda, Honda is coming working in India, then Honda will get the credit from India. They will not get the credit from Japan. So all the multinational companies, all the growing companies, all the companies which is really serious about the business, they are already doing all the compliance right now, because it is going to happen in coming years, in 1 year, 2 years time. What the next question? दूसरा सवाल क्या था नीरज जी आपका? Regarding the business side, I would like to add. Suppose uh, if you like to do trade or export in the world, so again you have to be, the legal binding should be there. Otherwise, your business will be skewed towards certain zone or territory. So if you want to do further business around the world, if you want to grow, because world market is going to open, and you have to be very competitive, and this is going to very important parameter in coming years. Are you carbon neutral or not? Thank you, Rohit ji. I think this topic is very interesting, and we are receiving many questions continuously. Yeah, So I think what we'll do is we'll compile all the questions, and we'll share with sure, you if you can sure. answer those questions in your email. Yeah, Neeraj. Because it's a very new market, very emerging market, as per the discussion we have held. People have many queries,
और आई थिंक यू आर वेरी राइट, अभी कंपनीज के लिए कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, लेकिन इवेंचुअली if they want to grow to their business in other countries or India, maybe eventually they have to go for this carbon footprinting analysis and all Yeah, those. yeah. So thank you so much, Rohit ji, for sparing your valuable time. I will just It was add one really point. I जी, was there in the Ministry of Environment and Forest, Climate Change yesterday. And after discussion with the government officials, we really understand that how serious they are in. So in coming months or year, there are a lot of policies are going to come, and we'll see the trend and changes, because our honorable Prime Minister is really committed for 2070 goal. So if you, because India is a really large country, we are not like a small country, European nations, but a lot of populations are there. So we have to work very hard in this direction. But uh, we should also aware that all those sustainable projects are getting recognitions and additional fund. So why not? So let's be sustainable and get recognition and get more money. Yeah. यस बिल्कुल, आई थिंक अभी तक जो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स थे उसमें हमें ऐसा लगता था कि व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी इट इज इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। Yeah, yeah, yeah. इससे ये है कि सस्टेनेबिलिटी जाने से वी अचीव एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर एफिशिएंसी एंड अदर मल्टीपल बेनिफिट्स। बट नाउ पॉइंट इज दैट इफ यू नो a company is going towards sustainability, it is not only increasing the human comfort and efficiency at the plant level, rather it is supporting the environment to be clean and it is Right. earning money while going sustainable. And So also it's a branding, you know great branding. branding. Yeah, Absolutely, absolutely. yeah. So thank you so much, Rohit ji, once again. Thank you, Reggie. Thank you Thank you, so Amitji. much. Thank Thank you. you. And Thank friends, we will compile all your questions and we will share these questions with Rohit ji. And Rohit ji will try to answer all the questions through email and we will send the reply to you. Thank you so much, friends. Now we have another wonderful speaker, Shubhabrata Rath. Rohit, please help me with this slide. So friends, जैसा हमने बताया, today we are conducting the training on GEM sustainability program and we will be discussing all technical aspects कि उसकी क्या requirement है, कैसे we can go for a GEM green building certification for a project, क्या हम कैसे इस प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम मार्किंग करेंगे, कैसे स्कोरिंग करेंगे। सो इट विल बी अ वेरी टेक्निकल एंड वेरी वंडरफुल प्रेजेंटेशन। सो आज क्योंकि सैटरडे है, वी ऑल आर sort of free, so that's why we thought that we should keep this training program on the last Saturday of every month, because normally fourth Saturday थोड़ा light रहता है। So thank you so much for bearing with us. We have another wonderful speaker, Shubhabrata Rath, who is Joint Director, ASSOCHAM GEM Green Building Certification Program. Mr. Rath did his master's degree in physics from University of Massachusetts, Boston. He is a mechanical engineer and a certified green building professional with more than a decade of experience in India and Middle East Asia in the fields of sustainability, teaching, motivation, research, and site implementation, both in building design and construction sector. He is more than passionate about the triple bottom line. The five elements of nature and holistic human well being is what drove him to be a writer, the totemic chase, and a psychological counselor as well. So, we have wonderful speaker with us. Please keep on sending your queries on the chat box, and we will try to answer all the queries. So, it's a technical presentation, it will take you around 40-50 minutes, but it's a very interesting presentation, I must say. और फ्रेंड्स, इस बीच में आई वुड रिक्वेस्ट यू अगेन दैट टुडे द जेम सर्टिफिकेशन, if you are going for GEM certified professional examination, kindly register today. The fees is discounted. I think it's 3,300 plus taxes. Tomorrow onwards it will be 5,000 plus taxes. So I would request you all, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, आप रजिस्टर कर लीजिए। वंस यू रजिस्टर यू कैन टेक द एग्जामिनेशन एनी टाइम इन फ्यूचर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने आज रजिस्टर किया तो कल एग्जाम देना है। आप रजिस्टर कर लीजिए, एग्जाम आप कभी भी दीजिए। इट्स एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आप रीअपियर भी कर सकते हैं। ओपन बुक एग्जामिनेशन है और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इफ यू आर जेम सर्टिफाइड प्रोफेशनल यू विल एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी। आप अपने सर्टिफिकेट्स, अपने प्रोजेक्ट्स को सर्टिफाई करा सकते हैं जेम में। आप कोई भी काम करते हो, आप साथ में ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन का एक प्रोफेशन अपने साथ ऐड कर सकते हैं। So thank you so much. I will not take much time. I would request Shubha to please start the presentation. Over to you, Shubha. Thank you, Neeraj ji. That's a great presentations by Rohit ji as well. And we right now we are in the track of learning about sustainability. और यहाँ पे एक नया चीज हमने इस बार देखा कार्बन क्रेडिट के बारे में। आई मीन रोहित जी जस्ट lit up the air and everybody is so much enthusiastic and कैसे एक घंटा निकल गया, एक डेढ़ घंटा निकल गया, मालूम ही नहीं पड़ा। So there are still a lot of things going on here in the carbon thing.
And when we're talking about carbon footprint, right now we will be talking about green building industry as well, because these are kindly interrelated. And how these are interrelated and why sustainability, that's we are going to also discuss about it today in our online masterclass. That will be for next 40 or 45 minutes. I will be there for this thing. Can you see this screen? If you stop. Okay. Yes, we can see. Just make it full screen. Yeah, sure. So, guys, welcome back. All the participants, we thank you all for being present here. So, the प्रेजेंस आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, क्योंकि 1.5 घंटे से आप लोग एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स में सुन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का रिगार्डिंग कार्बन फुटप्रिंट रिलेटेड. एंड व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट दैट आई कुड गैदर फ्रॉम इज दैट इट्स अ कोलैबोरेटिव अप्रोच फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि ऑल द नेशंस आर टुगेदर एंड इट्स अ क्यूमुलेटिव वन, बिकॉज व्हेन यू आर ट्राइंग ऑफ some kind of carbon trading and carbon offset programs, we are also thinking of making some sustainability works like renewable energy and everything. So when you're thinking of carbon, the word carbon, carbon monoxide, carbon dioxide, carbon related कोई भी चीज जब हमारे mind में आता है, so what comes into our mind is some kind of let me stop my video because bandwidth is decreasing. Okay. So what comes into our mind is kind of industries, emissions, vehicles, and all those things. But what we also do not realize that the thing carbon, it's inherent throughout around us, even inside a building, even where we are sitting right now. I'm here in my place, and that doesn't mean that I am free of carbon dioxide and there is nothing of the emissions going around here. So कैसे ये चीज होगा और क्या करना है इसके लिए? So we'll be talking about introductions to sustainability. ASSOCHAM GEM Building Certification Program. There will be a modules. Modules will be like building essentials will be there. I will give a brief about 5 elements: resource efficiency, water and energy conservation measures that is implemented as a part of this building certificate program, best sustainability practices, fire and life safety, and finally, GEM certified professionals. So we are talking about it. Neeraj already discussed about it a lot, so I don't have to waste more of your time. So sustainability, what is sustainability? Sustainability in terms of human interactions, because we cannot define any kind of terms, any kind of things without thinking about nature, right? Without thinking about human beings. क्योंकि at the end of the day हम जो भी कर रहे हैं, हम renewable energy कर लें, carbon trading कर लें, या फिर green certifications program कर लें, whatever, even एक पेड़ भी लगा ले, तो finally it is going to be a human interactive thing, right? अगर हमारे लिए उसमें कुछ दिखता नहीं है तो हम लोग करते नहीं है. So it's as practical as that. So let's think about sustainability from the human perspective point of view. That when you're talking about nature, when you're talking about green, when you're talking about something fundamentally, you can say we're talking about climate change, we're talking about global warming and all. So क्या देखते हैं हम नेचर बोलने से क्या चीज, अगर if you are disrupting everything, if you are destroying anything, फिर क्या चीज हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारे माइंड में क्या आ रहा है? When you think about nature, generally nature is for us like a vacation place, right? मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे अगर कोई नेचर बताएगा कि आपको कोई बोलेगा there is some nature, what you will see, you will feel like there is some kind of green building, I mean green paddy fields, or you will think about some sky, you will think about birds, you will think about lakes, you will think about sea beaches and everything. But do you think that this nature, that the place that we are sitting in right now inside a building, जहाँ पे हम लाइफ का राइट नाउ एटलीस्ट 80% of the time for the last 2 years we have been sitting inside a building, do you think it's a part of nature or not? Yeah. So that is the main thing. So when you're thinking about nature, we are kind of exporting it to the exterior of the building, and इस तरफ हम जब आ रहे हैं, इंटीरियर आ जा रहे हैं, it's we think it's artificial, it's not a part of nature. और इस यहाँ पे हम गलती कर लेते हैं, क्योंकि हमने कोई भी चीज यहाँ पे लगा रखे हैं, anything that you look around your place and you look around your walls, your roofs, your floors, your anything that you are made, even आपने स्टील का कोई चीज बना रखा है, even a computer जो लैपटॉप जो लगा रखे हैं सामने, the material that it is being made of, it is from extracted somewhere by some industry and given this shape, and उसके बाद इसको आप use करते हो. So in one way, whatever is outside, it's also in the inside, and whatever in the building facade that you are living, that is also a part of nature.
And all these things are fundamentally 5 things. आपका पृथ्वी तत्व अर्थ, right? Air element is there. Your energy element, energy जिसको आप फायर तत्व बोलते हैं, अग्नि तत्व बोलते हैं. Space is there, and all these things, 5 elements of nature is already there in everything. We just need to understand it. उसको समझने के बाद हम आएंगे ट्रिपल बॉटम लाइन पे. ट्रिपल बॉटम लाइन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. रोहित जी वाज राइट नाउ explained it beautifully. And this triple bottom line is everywhere. If you are talking about sustainability, this economy, this ecology, this environment aspects, this equity aspects, all must be uh, connected to each other. Then only all these things will survive. Then only all these things will grow. So that is a collaborative approach. That is a cumulative approach. So यहाँ पे हम new buildings और green building parameters की बात करेंगे. I will straight away go to the green building thing. What is a green building? अभी हम कार्बन ट्रेडिंग की बात सुन रहे थे रोहित जी से, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन. एंड वहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन ऑफसेट्स. लाइक कुछ चीजें हैं जहां पे हमको कार्बन एमिशन करना ही पड़ता है और उसको हम धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं. एट द सेम टाइम वी आर ट्राइंग टू पुट दैट इफोर्ट, दैट मनी स्पेंडिंग समवेयर एल्स टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी. सो सस्टेनेबिलिटी में क्या क्या चीज हो सकता है? देयर आर लॉट ऑफ एरियाज वेयर वी कैन पुट आवर फोकस और इफोर्ट, और वन ऑफ विच इज बिल्डिंग. व्हाई बिल्डिंग? बिकॉज आप बोलेंगे एमिशंस के बारे में अगर आप सोचते हैं तो इंडस्ट्री इज मेकिंग एमिशंस, vehicles are making emissions, a lot of things are making emissions, but is building making any emissions? Is building is very much environmental proof? Not really. I mean, even it looks like it's emission proof and we are doing nothing bad inside this home, but the structure of the building itself is emitting everything, a lot of things, carbon monoxide, carbon dioxide itself, the walls, the roofs, all the metals that are being used here, the people who are inside making a lot of activities, we all are emitting a lot of things through and throughout. Okay, 24 hours a day, 365 days, we are emitting a lot of things. So that emissions must also be compensated in some way. So we must, the first thing that we should be aware of, that we are making emissions inside a building, 40 to 45% emissions. The emissions inside a building is more than the emission that you look outside in the vehicles, in the roads, in the traffics. And it is hard to digest, but it's a fact. It's a test and data verified fact that buildings emit more than vehicles cumulatively. So उसके लिए बहुत सारे ग्रीन बिल्डिंग सस्टेनेबिलिटी पैरामीटर्स बना है. सो आई एम कमिंग टू द बेसिक्स, जहाँ पे नीरज जी ने ऑलरेडी आपको बताया था. देयर इज अ जीएम program and ASSOCHAM has made its own council for that. And this is also several parameters for new buildings. We have certain parameters for existing healthcare, interior, and so on. So different parameters are there, different kinds of building. And आज हम बात करेंगे न्यू बिल्डिंग्स के बारे में. न्यू बिल्डिंग्स के बारे में क्यों करेंगे? क्योंकि ये समझना इजी रहता है. अगर मैं डायरेक्ट हेल्थ केयर के बारे में जाऊंगा या फिर इंटीरियर में जाऊंगा, देयर माइट बी सम मच कॉम्प्लिकेटेड. सो वी पुट दिस न्यू बिल्डिंग्स आज आवर टेस्टिंग एंड आज आप प्लेटफॉर्म पे आप इसी के थ्रू समझिए चीजें. तो यहाँ पे right now you can see that there is principle 30. There are 30 principles, 135 points. Okay, fair enough. So there are certain things called E. E is for essential. Essential means mandatory. Mandatory means आपको करना ही है उस चीज को. क्यों करना है, कैसे करना है, that will explain without taking much time. So now you can see it here in this photograph. What you can see in this photograph itself, you can see the 5 elements of nature integrated, right? आपका यहाँ पे सब कुछ है, right? You can see water here, you can see soil here, right? You can see sunlight here, you can see everything. But it looks as a part of the nature. It does not. This building does not look like a distinctly different than nature. And nature is different, building is different. That thing is not here, right? When you look at it, you feel that you are inside somewhere, but actually here you are inside a building. This is what we are talking about. When you are inside a building, you should look like owning the nature or a part of it at least. Okay. So उसके लिए हमने पहले क्या किया? मैंडेटरी किया. मैंडेटरी क्या होता है? गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान्स. Government approved plans everywhere, anywhere, it must be mandatory. So when you're talking about buildings, even if we are not above plans, we are not above approvals, that must be there. So when we are making a green building program anywhere in the world, anywhere in India, you have to get some approvals. And apart from that, fire and life safety and sustainable buildings, for GEM, this is very much unique. This is also essential. You have to do it. Because fire and life safety programs, it's a part of sustainability. Now let's talk about sustainability.
Sustainability parameters, when you are defining sustainability parameters, what we are thinking about? We are thinking about conserving energy, conservation of water, air quality, material kind of conservation of metal resources, and material conservation of resources and everything. Okay. So this kind of, just a minute, let me stop for a while. I think. So I think I just need to, right now, I just need to introduce guys to Mr. Kausalji, who will be here before we move forward. Kausalji, are you here? Shubji, yes, I am here. Yeah. I just need to introduce you before I go forward, because the slated time for energy was 1 o'clock. So we can, if you want to be here. Mr. Kausal Lodha is the director of Agro with 10 plus years of experience, Sustainable WEW Engineering Services Private Limited. So Mr. Kausal Lodha, graduate in mechanical engineer with MTech in energy management. So his professional journey is related to energy and environment conservation, especially in building sector, going for new constructions, redevelopment. His professional journey begins with SGS India as an intern, a senior energy analyst in VKE Environmental, as associated with PwC India under European Union CECI 3 project, associate expert with the Energy and Resources Institute under BEE project to implement ECBC in Madhya Pradesh. He is a pioneer in that, and presently is working as a director in Sustainability WEW Engineering Services Private Limited. So before going to the generalized versions of sustainability, what I was explaining right now through my principles, I would like, if Kausalji is here right now, you can give your presentations on energy, daylight and fresh air. That will be great, sir. Then I can explain about other things. Sure. So are you going to upload my presentation or shall Yeah, I you can do share it. You can share it. Okay. Would you please give the presentations right to post, or maybe you can show. Okay, fine. Got it. So is my screen visible? Hello. Yeah. Yes. Yes, it's visible. नमस्ते सभी को. सॉरी मैं थोड़ा, मेरी रिक्वेस्ट थी कि 1 बजे स्टार्ट हो जाए, मैं कहीं और एंगेज हूँ, इस वजह से शायद इंटरप्ट करना पड़ा शुभ जी को. बेसिकली हम जिसके लिए यहाँ बातचीत करने वाले हैं, ये यहाँ मेरी कोशिश होगी कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनमें कुछ एनर्जी पर्सपेक्टिव से जो रिक्वायरमेंट होगी उसको हम कैसे फुलफिल कर पाएंगे और उसे किस तरह से फुलफिल करना चाहिए, इसको लेके मैं आपको जानकारी दे सकूं. और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए इसको काफी इजी तरीके से प्रेजेंट करूं. तो चलिए इसे शुरू करते हैं कि कैसे हम जेम रेटिंग अचीव कर पाएंगे और उसके प्रिंसिपल्स के रिक्वायरमेंट किस तरह से हम फुलफिल कर पाएंगे. तो बेसिकली जैसा कि अभी कुछ देर पहले शुभ जी ने कहा कि टोटल 30 प्रिंसिपल है, जिसमें से यदि आप 23 से लेके 27 देखते हैं तो ये सारे एनर्जी रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं जो हमें रिलेवेंट पॉइंट्स अचीव करने में मदद करते हैं. जैसे किसी के 12 है, किसी के 8 है या किसी के 6 हैं. तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स हम अचीव कर पाएंगे उतना बेटर हमारा स्कोर रहेगा रेटिंग लेवल, सर्टिफिकेशन लेवल के लिए. तो मैं कोशिश करूंगा कि इन पांचों से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट होगी किस तरह से इसे फुलफिल करना है और बाकी सारी चीजें मैं आपसे शेयर कर सकूं अपने एंड से. इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एनर्जी कंजर्वेशन हमारे इंडिया में किस तरह से फंक्शन कर रहा है या ड्राइव हो रहा है. तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, इसके तहत एनर्जी कंजर्वेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स या पॉलिसीज डेवलप की जा रही है. और ये पॉलिसीज खासकर जो होती है ये एज अ स्टैंडर्ड किसी भी रेटिंग सिस्टम में, खासकर जेम में इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत बनाई गई है. और इसे ECBC एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के नाम से जाना जाता है.
और हर स्टेट में इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। हर स्टेट ने इसको मॉडिफाई किया है और अपने स्टेट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसे नाम दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल एमपी में है तो एमपी ईसीबीसी, महाराष्ट्र में शायद यदि इम्प्लीमेंट होगा भविष्य में तो एमएच ईसीबीसी के नाम से आपको देखने को मिले, तो ये डिपेंड करता है। बट ये एज अ स्टैंडर्ड इन प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं यूज करना होगा। और ये जो डेवलप हुआ है ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा हुआ है, और हर स्टेट में इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी नियुक्त की गई है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जो कि बीडब्ल्यू यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ कंसल्टेशन में इसे अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करती है। अब यदि मैं रिक्वायरमेंट कहूँ इस कोड की, मैं ये कोड पहले क्यों फोकस कर रहा हूँ इसका रीजन आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं कि एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है प्रिंसिपल में उसका कॉन्सेप्ट क्या है। आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए ताकि प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको इजी लगे। तो ईसीबीसी बेसिकली 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। बिल्डिंग एनवेलप यानी जो भी बिल्डिंग का कंपोनेंट है, जैसे रूफ, वॉल्स, ग्लासेस, स्काई रूफ, यानी वो कंपोनेंट्स जो कि एक्सपोज्ड है एनवायरनमेंट में, वो सारे कंपोनेंट्स को कंसिडर किया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि उनका मटेरियल सिलेक्शन कुछ इस तरह से हो कि कम से कम हीट ट्रांसफर बिल्डिंग में हो। सेकंड है कंफर्ट सिस्टम एंड कंट्रोल्स। यहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि हीटिंग या कूलिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट या मैकेनिकल सिस्टम्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स हम इंस्टॉल करने वाले हैं या कर रहे हैं, वो एफिशिएंटली वर्क करे, इफेक्टिवली उनका यूज हो सके, ये हमें ध्यान करना होता है, सुनिश्चित करना होता है। इसके बाद है लाइटिंग सिस्टम एंड कंट्रोल्स। यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइटिंग को लेके बात और कोशिश ये की जाती है कि इसको कम से कम वो करें, और साथ ही इसको डे लाइट जो कि हम बिल्डिंग एनवेलप में हमें कवर करना होती है सिंक करें, इस तरह से स्विच ऑन स्विच ऑफ करें, ये इस तरह की काफी कुछ होती है। लास्ट में हमें इलेक्ट्रिकल एंड रिन्यूएबल एनर्जी जानकारी हमें देखने को मिलेगी, जिसमें यूपीएस, ट्रांसफार्मर सिलेक्शन, इलेक्ट्रिकल लॉस है, या फिर पावर फैक्टर कंट्रोल है, सब मीटरिंग है, कि सोलर बेस्ड भी हो सकता है, विंड बेस्ड हो सकता है, या किसी और सोर्स के आधार से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हमें ईसीबीसी में मिलते हैं, जो कि एनर्जी के रिक्वायर, और साथ ही और स्टैंडर्ड्स के लिए भी हम ईसीबीसी में रेफरेंसेस देखेंगे, जैसे कि नेशनल बिल्डिंग कोड या एसपी 41 या कोई और। तो अब डिपेंड करता है कि हम किस तरह से कोड को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। तो हर सेक्शन में, जो सेक्शन मैंने आपको बताए हैं ये 4, हर सेक्शन में 2 टाइप की रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलती है। पहली है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, दूसरी है प्रिस्क्रिप्टिव रिक्वायरमेंट। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करना ही होती है, एक टाइप से कंपलसरी है, हम ये समझ रहे हैं क्लियरली। और प्रिस्क्रिप्टिव रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं ऑप्शनल होती है, यानी अगर हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे लिए जो बेहतर ही होगा, क्योंकि उससे एनर्जी परफॉर्मेंस बेहतर होता चलेगा। अब अल्टीमेटली इन चीजों का ध्यान रखते हुए हमें एक फैक्टर को और ध्यान रखना है, क्लाइमेट, है ना। तो किस तरह की बिल्डिंग है, कहाँ बन रही है, उसके अकॉर्डिंग उसका ऑपरेशन क्या होगा, क्या मटेरियल यूज हो रही है, ये सारी चीजें हो गई। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल कर दी, ऑप्शनल रिक्वायरमेंट आपने अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर ली। अल्टीमेटली जो आपको कैलकुलेट करना है वो है एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स रेशो। एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स रेशो को आप शॉर्ट में ईपीआई रेशो भी कह सकते हैं, जो कि मैं आगे इसी नाम से डिनोट करूंगा। अब ये क्या है, इसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, हम ये समझते हैं। तो ईपीआई रेशो को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ईपीआई प्रपोज्ड क्या है और स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, तो पहले मैं वो क्लियर करता हूं। तो ईपीआई, एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये बेसिकली एनुअल एनर्जी कंजम्पशन और बिल्टअप एरिया का रैशनल है। यानी आप अपने घर का या किसी बिल्डिंग का या किसी प्रोजेक्ट का जिस पे अभी आप काम कर रहे हो या हो गया हो, जिनका बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास हो, उसका 12 महीने का बिल लेके आप उसको उसके बिल्टअप एरिया से डिवाइड कर दीजिए, जो कि स्क्वायर मीटर में होना चाहिए। तो जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी ईपीआई, एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है,
अब ये जो कैलकुलेशन है एनुअल एनर्जी कंजम्पशन का और बिल्टअप एरिया का को लेके ईपीआई का जो कैलकुलेशन है, ये आपको दो चीजों के लिए करना है। एक, जो मेजर्स आप ले रहे हैं, जो चीजें आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके लिए, और दूसरा स्टैंडर्ड्स, यानी जो कोड में ईसीबीसी में जो थ्रेशोल्ड्स दिए गए, जो बेंचमार्किंग दी गई है पैरामीटर्स की, उसके लिए। तो ये दो तरीके से आपको ईपीआई कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसे आप कहेंगे ईपीआई प्रपोज्ड, यानी जो आप डिजाइन कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो, और ईपीआई स्टैंडर्ड, जो कि कोड के दिए गए मानकों के आधार पे आप अपनी बिल्डिंग के लिए कैलकुलेट करेंगे, जिसके आधार पे। तो इनका जब आप रेशो निकालते हैं तो वो कहलाता है ईपीआई रेशो, और ये रेशो 1 से बराबर या उससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। ये रेशो यदि 1 से ज्यादा आ रहा है, यानी हमारी बिल्डिंग कंप्लाई नहीं कर रही है, यानी यदि कंप्लाई नहीं करेगी तो डेफिनेटली आप जैम रेटिंग अचीव नहीं कर पाएंगे, आप प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर ईसीबीसी में वो मैंडेटरी है तो कहीं ना कहीं आपको जैम रेटिंग में वो रिक्वायरमेंट्स मैंडेटरी प्रोविजन में ही देखने को मिलेगी। अब जो बिल्डिंग बनी नहीं है या जो बनने वाली है या जो रेट्रोफिटिंग होने वाला है, उसको लेके आप किस तरह से एनर्जी कंजम्पशन कैलकुलेट करेंगे, तो दो मेथड होते हैं जो कि कोड में ही दिए गए हैं। होल बिल्डिंग परफॉर्मेंस मेथड, जिसे हम सब सिमुलेशन के नाम से ज्यादा अच्छे से जानते हैं, जिसमें एनर्जी का, डे लाइट का, सीएफडी का और भी कई सारे तरह तरह के सिमुलेशन होते हैं। बट प्रिसाइजली यहाँ पे आपको एनर्जी का कंजम्पशन का सिमुलेशन करना होगा, उसके लिए सिमुलेशन करना होगा, जिसके लिए आपको एनर्जी मॉडलिंग आनी चाहिए। सेकंड है प्रिस्क्रिप्टिव मेथड, यानी मैन्युअली आप कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली मैनुअल मेथड बहुत सिंपल है, अगर आप ईसीबीसी को रिफर करेंगे तो वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन है। फॉर एग्जांपल, यदि आप स्प्लिट एसी सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी डिजाइन में, तो स्प्लिट एसी के लिए 3 स्टार एसी होना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कोड की, फॉर एग्जांपल। तो आपको 3 स्टार या उससे बेहतर एसी ही इंप्लीमेंट करना होगा, करेक्ट। सिमिलरली, यदि आप कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं वॉल के लिए जिसकी यू वैल्यू 0.44 दी गई है, तो आपको उसके इक्वल या 0.44 वॉट पर स्क्वायर मीटर डिग्री केल्विन, तो आपको उससे बेहतर, यानी ये वैल्यू जितनी कम होगी उतनी बेहतर होती है, जितनी कम होगी उतना हीट ट्रांसफर रेट कम होगा। तो जितना बेहतर मटेरियल आप रखते हैं, अपनी बिल्डिंग में सिलेक्ट करते हैं, उतना आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है, या फिर एटलीस्ट जो 0.44 वैल्यू आपको थ्रेशोल्ड दिया गया है उसको आपको मीट करना होगा। उससे ज्यादा यदि अगर आप जाते हैं, यानी इनएफिशिएंट वे में आप कंपोनेंट को लेके जाते हैं, तो रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाएंगे। तो मैनुअल मेथड के केस में कहीं ना कहीं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना होता है, और कई बार इसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है। तो ज्यादातर यही आपके लिए सजेस्टिव होगा मेरी तरफ से कि आप होल बिल्डिंग परफॉर्मेंस यानी सिमुलेशन मेथड को सीखें, समझे जल्द से जल्द, और उसी का यूज करें, जिससे कि आपका प्रिसीजन लेवल भी बढ़े और जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उनका भी इसमें बेनिफिट हो। अब बिल्डिंग एनवेलप परफॉर्मेंस, यानी अगर मैं बिल्डिंग में ये कहता हूं कि हमें हीट कम से कम मिले इंटरनल स्पेसेस में, तो उसके 3 मोड होते हैं। एक है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन यानी जैसा कि हम समझते हैं, अगर बाहर कोई धूप है और अगर आप किसी कांच पे हाथ लगाते हैं तो वो गर्म लगता है, करेक्ट। तो ये उस कांच के मटेरियल से जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो है। अब मान लीजिए उसी कांच से आप थोड़ा सा दूर बैठे हैं और धूप आपके ऊपर आ रही है, तो वो जो आती है वो कहीं ना कहीं रेडिएशन या कन्वेक्शन के कारण आती है, यानी डायरेक्टली आप ओपेक सरफेस के टच में नहीं है या किसी सरफेस के टच में नहीं है, तो कंडक्शन आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। बट यदि आप उस सरफेस से दूर है और आपको अगर हीट महसूस हो रही है, तो वो कन्वेक्शन या रेडिएशन की वजह से होता है। सिमिलरली, बिल्डिंग के काफी सारे कंपोनेंट्स हैं जहां से कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन, ये तीनों तरह से हीट ट्रांसफर बिल्डिंग के इंटरनल स्पेसेस में होती है। कन्वेक्शन जनरली जो हीट फ्लो होता है वो किसी ना किसी फ्लूइड के माध्यम से होता है, चाहे वो एयर के पॉइंट ऑफ एयर हो या चाहे वो वाटर हो। और रेडिएशन को यदि समझते हैं हम, तो आसानी से समझने के लिए आप ये मान के चलिए
कि कोई भी मटेरियल जिसपे हीट आ रही है बाहर के एनवायरनमेंट से, तो वो हीट अप होके इमिट करेगा रेडिएशन को एक वेव फॉर्म में। तो ये जो रेडिएशन इमिट होगी उन मटेरियल से, वो कहीं ना कहीं हीट गेन या हीट प्रोड्यूस करेगी, या सोर्स ऑफ हीट होगा इंटरनल स्पेसेस के लिए। तो ये आपको समझना होगा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कि कौन सा स्पेस है या कौन सा मटेरियल है या क्या बिल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से इन तीनों में से हीट गेन हो सकता है, और उसको आपको सेंसिबली मिनिमाइज करना होगा। अगर कंफर्ट सिस्टम के कॉन्सेप्ट को हम समझें तो कहीं ना टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, ना कम। अगर हम नेशनल बिल्डिंग कोड या ईसीबीसी को समझते हैं तो 26 से 28 जो टेम्परेचर है ये ह्यूमन के लिए या ह्यूमन रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से कंफर्ट लेवल पे रखने के लिए माना गया है, और यही हमें अचीव करना है, जिसको आप चाहे नेचुरली या मिक्स मोड में अचीव कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं आप सीलिंग फैंस या ये सारे जनरली नेचुरल वेंटिलेशन के केस में यूज कर सकते हैं, बट मिक्स मोड का मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके साथ नेचुरल वेंटिलेशन को भी ऑपरेट कर रहे हैं या उसको भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। और थर्ड होता है प्योरली एक्टिव सिस्टम, यानी मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होना, जैसे कि स्प्लिट एसी या सेंट्रलाइज्ड एसी, ये सारे होते हैं। अगर मैं खासकर नेचुरल वेंटिलेशन के केस में बात करूं तो कुछ वेरिएबल पैरामीटर्स होते हैं जो हमें ध्यान देने होते हैं, और कुछ होते हैं कंस्ट्रेंट्स जिन्हें हम समझ के चलना होता है, बट हम वहां पे कोई चेंजेस या कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं ले सकते हैं, चाहे कैलकुलेशन के टर्म्स में हो या चाहे सिमुलेशन के टर्म्स में हो। बट जो वेरिएबल्स में फैक्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि एयर स्पीड, ह्यूमिडिटी, रेडिएंट या एयर टेम्परेचर, ये कुछ चीजें हैं जो हम किसी ना किसी तरीके से, चाहे मटेरियल सिलेक्शन हो या चाहे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का सिलेक्शन हो या विंडो साइजिंग हो, किसी ना किसी माध्यम से हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, और इसी के आधार पे कहीं ना कहीं नेचुरल वेंटिलेशन हम अचीव कर सकते हैं। इसकी पूरी रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन आपको ईसीबीसी और SP41 के माध्यम से करने को मिलेगी, या आप कर सकते हैं इनका यूज करके। एनबीसी में कहीं ना कहीं टीएसआई थर्मल समर इंडेक्स, ट्रॉपिकल समर इंडेक्स का एक कैलकुलेशन है, बेसिकली मैथमेटिकल एल्गोरिदम है, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का, उसका यूज करके आप नेचुरल वेंटिलेशन के लिए जा सकते हैं। मैं नेचुरल वेंटिलेशन पे बात इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इंडियन कंटेक्स्ट में नेचुरल वेंटिलेटेड बिल्डिंग बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ एरियाज को यदि हम छोड़ दें, कुछ पर्टिकुलर कोल्ड एरियाज को यदि हम छोड़ दें, रीजन को छोड़ दें, तो बाकी मैक्सिमम एरिया में इंडिया के हम नेचुरल वेंटिलेटेड बिल्डिंग बना सकते हैं, और हमें उसी के लिए आगे बढ़ना चाहिए ताकि कम से कम CO2 इमिशन हो। और प्रधानमंत्री ने हाल ही में जो नेट जीरो के टारगेट हमारे इंडिया के लिए सेट किए हैं ग्लोबल पे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, उसको भी हम मीट कर सके। एनीवेज, अगला है कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है नेचुरल वेंटिलेशन को हम कैसे माने कि नेचुरल वेंटिलेटेड बिल्डिंग डिजाइन हुई है। तो एक एडेप्टिव कंफर्ट स्केल बोली जाती है, या हम कह सकते हैं एक स्केल दी गई है जिसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि बिल्डिंग नेचुरली वेंटिलेटेड है या नहीं। ये एनबीसी में या SP41 में आपको देखने को मिलेगी, और इसको अचीव करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, पैसिव कूलिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि नाइट फ्लशिंग, अर्थ एयर टनल, रेडिएंट कूलिंग, इवापोरेटिव कूलिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारे कल्चर में काफी समय से यूज की जा रही थी, पिछले कुछ दशकों से शायद ये यूज में नहीं है, बट अब चूंकि नया मार्केट है, एक नया कंस्ट्रक्शन ईरा की ओर इंडिया बढ़ रहा है, तो हम इनको एक नए तरीके से मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जस्टिफाइड वे में हम नेचुरल वेंटिलेशन बिल्डिंग, नेचुरल वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स को बना सकते हैं। एयर कंडीशनिंग की बात करूं तो किसी भी एयर कंडीशनिंग के लिए यदि आप जाते हैं प्रोजेक्ट में, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वहां पे फ्रेश एयर इनटेक का प्रोविजन जरूर हो, अदरवाइज आप रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है ये कई तरह के हैं, चाहे वो स्प्लिट एसी हो, पैकेज्ड एसी हो, VRF, सेंट्रलाइज सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, काफी सारे।
अब यहाँ पे आप किस तरह का सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको थ्रेशोल्ड्स देखने को मिलेंगे कोड में, और आप अकॉर्डिंगली उन थ्रेशोल्ड उससे एफिशिएंट या इक्विवेलेंट मटेरियल या इक्विपमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी रिक्वायरमेंट्स या ये सारी चीजों के थ्रेशोल्ड्स आपको ईसीबीसी में देखने को मिलेंगे। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्चुअली आप क्या डिजाइन कर रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट को आप किस तरह से इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो यानी अब ये एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है कि जब कॉन्सेप्चुअल डिजाइन स्टेज पे कोई प्रोजेक्ट होता है, खासकर आर्किटेक्ट के पास, तो वहां पे बाकी कंसल्टेंट ऑन बोर्ड होना बहुत जरूरी होंगे। आप में से यदि कोई बिल्डर है या कोई इंजीनियर है या कोई पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी साइड काम करता है, तो उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हर कंसल्टेंट ऑन बोर्ड होना चाहिए फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल स्टेज ऑफ डिजाइनिंग। अदरवाइज आपके लिए कंप्लायंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ती है लेटर स्टेज पे को इंटीग्रेट करने से। यदि मैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बात करूं, तो ये आपको डेफिनेटली पता होगा कि इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट उसमें होना चाहिए। इसके अलावा एयर हैंडलिंग यूनिट, या हम कह सकते हैं एक सप्लाई होता है जो इंटरनल स्पेसेस में सप्लाई करता है, चाहे स्प्लिट एसी में आप देखिए जिसे हम इंडोर यूनिट कहते हैं। अगर सेंट्रलाइज्ड एसी है तो वहां पे एएचयू के माध्यम से हर रूम में सप्लाई जाता है, यानी एक ही बड़े एक ही पंखे से हम मल्टीपल स्पेसेस में एयर सप्लाई देते हैं। उसमें फ्रेश एयर इनटेक कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड रहती है, चाहे हम कुछ परसेंटेज ऑफ फ्रेश एयर का प्रोविजन रखें डैम्पर्स के थ्रू, या हम 100% फ्रेश एयर रखें। ये डिपेंड करता है डिजाइनिंग पे पूरी तरह, बट कहीं ना कहीं एएचयू में ये सारे इंटीग्रेशंस होते हैं। कई बार ये बाहर के क्लाइमेट यानी एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कंट्रोलर्स के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं कि कितना ओपनिंग फ्रेश एयर इनटेक का होना चाहिए। क्योंकि यदि समर में जहाँ पे 42-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो वहां पे फ्रेश एयर इनटेक लेना मैकेनिकल सिस्टम में कहीं ना कहीं एक इनएफिशिएंट अप्रोच हम कह सकते हैं। तो उसमें एटलीस्ट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा ह्यूमन प्रोडक्टिविटी के लिए या हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना एटलीस्ट हमें एयर इनटेक रखना चाहिए। अदरवाइज विंटर में ठीक इसका उल्टा हो सकता है कि हम मैक्सिमम एयर इनटेक रखें ताकि एसी पे कम लोड आए। तो ये सारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज है जो कंट्रोलर्स के माध्यम से यानी अलग अलग सेंसर्स के माध्यम से हम कंट्रोल करने के लिए करते हैं, और इन्हीं चीजों का हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि प्रिंसिपल्स के रिक्वायरमेंट में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। तो अल्टीमेटली सिमुलेशन टेक्निक की मदद से आप एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन पा सकते हैं और बेहतर से बेहतर सिस्टम डिजाइन करके कम से कम एनर्जी कंजम्पशन अपने डिजाइन के लिए कर सकते हैं। लाइटिंग सिस्टम के लिए बात करूं तो अगेन यहाँ पे जहां भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल आप सिस्टम्स देखेंगे वहां पे आपको कंट्रोलर्स या सेंसर्स का यूज करना होगा डेफिनेटली। थोड़ा सा आपको इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को लेके समझना होगा। जैसे यदि कोई विंडो है, वहां पे उस विंडो की वजह से उस रूम का 50% यदि डे लाइट एरिया बन रहा है, यानी वहां 50% एरिया में डे लाइट अचीव हो रही है और रिमेनिंग 50% में नहीं हो रही है, तो आर्टिफिशियल लाइटिंग जो आप वहां पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से कंट्रोल की जा सके स्विचेस से कि 50% ऑफ या उस पर्टिकुलर रोज को ऑफ किया जा सके और रिमेनिंग रोज को ऑन रखा जा सके जहां पे डे लाइट नहीं है। तो इस तरह के ऑपरेशंस चाहें तो आप सेंसर्स या कंट्रोलर्स के माध्यम से भी कर सकते हैं, या फिर आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि प्रिंसिपल में रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप जब उसे पढ़ते हैं, अपने प्रोजेक्ट के लिए समझते हैं, उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने मेजर्स को डिफाइन करना होगा, चैनलाइज करना होगा। यहाँ पे बहुत जरूरी है जहां भी डे लाइट अचीव हो रही है वहां पे प्रॉपरली सेंसर्स के साथ आप आर्टिफिशियल लाइटिंग्स को इंटीग्रेट करें, प्लस कितने एरिया के लिए कितना वॉटेज परमिसिबल है ये आपको ईसीबीसी में देखने को मिलेगा। और वो रिक्वायरमेंट को हम कहते हैं लाइटिंग पावर डेंसिटी, यानी यदि 10 वॉट का सीएफएल है जो कि 100 स्क्वायर मीटर को 100 स्क्वायर मीटर 100 वॉट का यदि कोई लाइटिंग सिस्टम है जो कि 10 स्क्वायर मीटर को लाइट अप कर रहा है, तो वहां पे उसका एलपीडी जो कैलकुलेट होगा 100 वॉट डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर मीटर।
तो 10 वॉट पर स्क्वायर मीटर का उसका लाइटिंग लोड निकल के आता है। क्या ये थ्रेशोल्ड से मीट कर रहा है या नहीं, ये हमें क्रॉस चेक करना होगा। यदि वो मीट कर रहा है तो हम कंप्लाई कर रहे हैं, यदि नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली हमें बेटर ऑप्शंस आइडेंटिफाई करने होंगे। डे लाइट के कई अपने तरीके होते हैं, इसमें आर्किटेक्चरल जो विजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से आर्किटेक्ट अपनी बिल्डिंग को डिजाइन करना चाह रहे हैं एस्थेटिकली भी, और वहां पे वो किस तरह से प्रोविजन रख रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ साइड में हो या साउथ साइड में हो। यदि साउथ साइड में है तो प्रॉपरली शेडिंग देनी होगी ताकि डायरेक्ट रेडिएशन कम से कम हो सके, या फिर आपको ग्लास का मटेरियल काफी ऑप्टिमाइज करना होगा, जैसे डबल ग्लेजिंग या ट्रिपल ग्लेजिंग के लिए जाना होगा जो कि कम से कम हीट ट्रांसफर रखें बिल्डिंग में। इस तरह के मेजर्स आप टीम के साथ मिलके अडॉप्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो कैलकुलेशन हमें करना है वो है यूडीआई, यूजफुल डेलाइट इल्यूमिनेंस। ये हमें अचीव करना होता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि खिड़कियां अच्छी दी है, बट अगर हम उसका यूज करते हैं डेलाइट पर्पज से तो चमक, ग्लेयर जिसे कहते हैं, वो हमें देखने को मिलती है। तो ये ग्लेयर ना प्रोड्यूस हो उसके लिए एक लिमिट दी गई है कि जो लक्स लेवल हो वो 100 लक्स से 2000 लक्स के बीच में होने चाहिए, और प्लस जो रिक्वायरमेंट एनबीसी में दी गई है उसे मीट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिसर्स के लिए यदि 300 टू 500 लक्स की रिक्वायरमेंट है तो हमें उतना ही मीट करना है डेलाइट में भी, तो उसके अकॉर्डिंग आप विंडोज की डिजाइन कर सकते हैं। बट इससे 2000 लक्स, क्योंकि जरूरी नहीं है कि डे लाइट जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो हर समय उसी रेंज में हो, कुछ वक्त ऐसे हो सकते हैं जो जहां पे ज्यादा रेडिएशन हमें मिले, सॉरी ज्यादा डे लाइट हमें अचीव हो, तो वहां पे ये ध्यान रखना होगा कि वो एक्सेस जो इल्यूमिनेशन है वो 2000 से ऊपर ना जाए, खासकर उन रेगुलरली ऑक्यूपाइड स्पेसेस में। तो ये जो रेंज है इसमें हम जो डे लाइट अचीव करते हैं वो कहलाता है यूजफुल डे लाइट इल्यूमिनेंस, यूडीआई, और यही हमें अचीव करना होता है। तो आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। अगर आप जो लेफ्ट साइड में पहली इमेज है वो देखते हैं तो विंडो के लेफ्ट साइड में L1 L2 जो कि 1 मीटर साइड में होना चाहिए विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, यदि ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और जो ए है ये डे लाइट फैक्टर जो एक टेबल में आपको कोड में मिलेगा, आप उससे अपने लोकेशन और अपने प्रोजेक्ट के ओरिएंटेशन जहां पे आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं उसके लिए उस डे लाइट फैक्टर को आप कंसिडर करिए। बेसिकली एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है जो कि आप फ्लोर से विंडो की जो टॉप मोस्ट हाइट होती है वो कैलकुलेट करके उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वो ए कहलाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फ्लोर से लेके जो विंडो की टॉप मोस्ट हाइट होती है उसको आप उस करेक्शन फैक्टर जिसे डे लाइट एक्सटेंड फैक्टर कहा जाता है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू आती है वो ए जो कि आप इमेज में देख सकते हैं वो कहलाएगी। तो इस तरह से आप मैपिंग करके डे लाइट एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं जहां ओवरलैप हो रहा है मल्टीपल विंडोज के केस में, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर, ये एरियाज को आपको कैलकुलेट करके डिडक्ट करना होगा किसी एक रेक्टेंगल के लिए जो ओवरलैप हो रहा है, ताकि आपकी एग्जैक्ट एरिया कैलकुलेशंस आपके पास हो। या फिर आप राइट साइड में जो लास्ट इमेज है आप उसको देख सकते हैं जो कि सिमुलेशन के माध्यम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आप जैसे जैसे इन यूटिलिटीज को ऑप्टिमाइज करते हैं आपका कंजम्पशन कम होगा। तो सबसे पहला जो आप पिरामिड देख रहे हैं जो लोड है, यानी जो कंजम्पशन एंड यूजर के द्वारा किया जा रहा है वो सबसे ज्यादा होता है कंफर्ट यूटिलिटीज का, खासकर कमर्शियल बिल्डिंग की यदि हम बात करें, या नॉन प्रोसेस लोड्स का। उसके बाद होता है लाइटिंग का या एक्सटर्नल लाइटिंग का, और अल्टीमेटली बाकी सारी चीजें जो रह जाती है। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हाई कंजम्पशन एरिया होता है या जो सबसे इम्पोर्टेंट हॉटस्पॉट्स होते हैं जैसा कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, इन पे हमें ज्यादा काम करना होता है। तो हम जैसे जैसे मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं वैसे वैसे हमारा एनर्जी कंजम्पशन कम होता है, जो कि आप राइट साइड में देख सकते हैं क्या इम्पैक्ट होता है। चाहे आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल सिस्टम्स को अडॉप्ट करते हैं या मटेरियल्स ऑप्टिमाइज करते हैं तो क्या वेरिएशंस सेविंग्स के टर्म्स में आपको देखने को मिल सकती है। रेंज आपको दी गई है परसेंटेज में, तो ये आपको आगे जाके अपने प्रोजेक्ट्स में देखना होगा।
अल्टीमेटली बहुत सिंपल है, आप अपना डिजाइन शुरू करिए, बाउंड्री कंडीशंस आपकी क्लाइमेट कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग बिल्डिंग किस टाइप की आप बिल्डिंग बना रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होती है क्लाइंट की तरफ से। आप क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट समझिए, अपनी चेकलिस्ट प्रिपेयर कीजिए इस रेटिंग के इस सर्टिफिकेशन के लिए जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, चाहे 4 स्टार, 5 स्टार या 3 स्टार जेम सर्टिफिकेशन लेवल। उसके बाद आप अपनी बिल्डिंग्स का स्केच बनाना शुरू करिए, तो जो चेकलिस्ट में चीजें आपने कंसीडर की है वो आपके सामने हो और आप ये ध्यान दे सके कि हाँ, ये चीजें हम इंटीग्रेट करते चल रहे हैं, जिससे कि आपका कॉस्ट कम ना हो। काफी लोग क्या करते हैं कि जिसे मैं पर्सनली यदि कहूँ तो ये एक कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक होती है, ये जान करके नहीं होती है, बट प्रैक्टिकलिटीज है, काफी फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करना होता है। और हम ड्राइंग प्रिपेयर होने के बाद, एटलीस्ट कई बार ड्राफ्ट ड्राइंग्स प्रिपेयर हो जाए उसके बाद हम मेजर्स को इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं कि कॉस्ट बढ़ रही है या हम ज्यादा बेहतर सर्टिफिकेशन लेवल अचीव नहीं कर पाए हैं, इस तरह की काफी सारी चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं यदि आप शुरू से ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन एक चैनलाइज्ड वे में अगर आप प्रोसेस करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और अल्टीमेटली आप अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करिए, प्रिंसिपल्स वापस से क्रॉस चेक करिए फाइनल डॉक्यूमेंट के लिए कि आपने सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल की है या नहीं, और फिर उसको आप अपने क्लाइंट को या ओनर को दे सकते हैं रिव्यू के लिए, और उसके बाद आप सर्टिफिकेशन के लिए सबमिट करिए। ये प्रोसेस तो बहुत इजी और क्लियर आपको शायद लग रही होगी, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल को समझना। तो अब यदि मैं सबसे पहले 23rd प्रिंसिपल एनर्जी मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करूं, तो ये मैं ऑलरेडी आपको जैसा पहले शेयर किया था कि प्रिस्क्रिप्टिव मेथड होती है, होल बिल्डिंग परफॉर्मेंस मेथड होती है, और ईसीबीसी आपको में दी गई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा। तो ये तो रिक्वायरमेंट समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए कि ईपीआई रेशियो जितने बेहतर होगा, यानी एक या उससे कम होना चाहिए, पॉइंट आपको 12 पॉइंट मिलेंगे, यानी 20% सेविंग पे आपको अल्टीमेटली 12 पॉइंट्स अचीव हो जाते हैं। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमम पॉइंट्स को अपना गोल रखना होगा, अचीव करना होगा, और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को ध्यान रखना होगा कि आप फुलफिल कर रहे हैं, उसको मिस नहीं कर रहे हैं इस पूरी प्रोसेस में। तो जब आप 12 पॉइंट्स के लिए क्लेम करते हैं तो ऑलरेडी आपके सारा डॉक्यूमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ ईपीआई कैलकुलेशन हो जाता है, चाहे आप सिमुलेशन मेथड से करिए या मैनुअल मेथड से कैलकुलेशन करिए। सेकंड है प्रिंसिपल नंबर 24, जहां पे एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स आप देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? इंस्टॉल एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी एनर्जी कंजम्पशन जो हमें कम करना है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट दी है इन्होंने कि हम जो भी पावर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर रहे हैं वो ईसीबीसी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, या इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स इंस्टॉल कर रहे हैं वो स्टार लेबल्ड हो, यानी 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार। तो इस तरह के आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं या डिवाइसेस हैं वो ध्यान रखिए कि लेबल्ड हो, स्टार लेबल्ड हो, और उनके डॉक्यूमेंटेशन जो टेक्निकल कट शीट्स हैं या मैन्युफैक्चरर ब्रोशर्स हैं उसे आप संभालिए उस पर्टिकुलर मॉडल के लिए, उसको टैबलेट कीजिए, प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में प्रिपेयर कीजिए और सबमिट कीजिए। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, और नेट पे अब तो काफी सारी रेफरेंस सबमिटल डॉक्यूमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। 25th प्रिंसिपल जो है वो है यूज ऑफ इम्पेरिशेबल एनर्जी सोर्सेस। अब ये क्या है? तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, तो आप चाहें तो सोलर पैनल के साथ जाइए, ईसीबीसी की अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट दी है वो ईसीबीसी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा होगी या कम होगी, तो ये स्टेट स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट हो सकता है, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपकी ईसीबीसी की रिक्वायरमेंट है मैंडेटरी वो आप फुलफिल कर रहे हैं, और एडिशनली मैक्सिमम पॉइंट्स अचीव करने के लिए आप यहाँ की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि ईसीबीसी कहीं ना कहीं काफी सारे स्टेट्स में मैंडेटरी हो चुका है। तो अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ईसीबीसी कंप्लाई बिल्डिंग बनानी होगी। तो यदि आपकी जेम सर्टिफाइड बिल्डिंग है तो आप ये कह सकते हैं
कि आपकी ईसीबीसी कंप्लायंट बिल्डिंग भी है, बट चूंकि ईसीबीसी एक गवर्नमेंट पॉलिसी है, एक गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, तो मान्यता सबसे ज्यादा जो होगी वो ईसीबीसी की होगी। यदि आपको गवर्नमेंट के द्वारा कंप्लायंस सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपको कहीं ना कहीं आप उसे रेटिंग सिस्टम के सर्टिफिकेशन प्रोसेस में भी यूज कर सकते हैं। यानी जैम सर्टिफिकेशन के लिए वो सर्टिफाई जो आपको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ईसीबीसी कंप्लायंस का सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो भी कहीं ना कहीं काफी हेल्पफुल होगा। और सेम डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे एनर्जी सेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। प्रिंसिपल 26 जो है वो है यहाँ पे, जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा, आर्टिफिशियल लाइटिंग्स जो आप यूज करना होगा, अपना होगा, ऐसी सारी डिजाइन कंसिडरेशंस आपको रखनी होगी। पावर डेंसिटी जो मीट करनी होगी और उसको आप जितना रिड्यूस करेंगे, जैसे यदि 11 पर स्क्वायर मीटर का थ्रेशोल्ड है और यदि आप डिजाइन कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 50% से बिलो आप आ जाते हैं, सीखने को मिल सकते हैं डे लाइट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए। तो ये देखने को मिलेगी, चाहे आप सिमुलेशन अप्रोच के लिए जाएं या फिर आप मैन्युअल अप्रोच से जा रहे हैं, अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स आप क्लेम कर सकते हैं। एडिशनली सेंस, चाहे वो डे लाइट सेंसर्स हो या जैसे स्ट्रीट लाइट्स के लिए एस्ट्रोनॉमिकल या टाइम स्विच कंट्रोलर्स हो, जो कि शाम होते ही लाइटों स्ट्रीट लाइट को ऑन कर दे और सूर्योदय होते ही उन्हें बंद कर दें। तो इस तरह का जो कंट्रोलर्स हैं, या इंटरनल स्पेस में जैसा कि मैंने कहा डे लाइट सेंसर्स को यदि आप इक्विप करते हैं तो अकॉर्डिंगली आप एडिशनल पॉइंट्स को अचीव कर पाएंगे और मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। अल्टीमेटली प्रिंसिपल नंबर 27 है जो कि हेल्दी इंडोर एयर क्वालिटी को लेके है। यहाँ पे बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट होगी कि फ्रेश एयर इनटेक का प्रोविजन आपको देना होगा। उसके लिए प्रॉपर एक डक्टिंग साइज होती है जो कई बार बढ़ जाती है यदि आपने पहले से फ्रेश एयर इनटेक का प्रोविजन नहीं रखा है। तो इस तरह की चीजों को ध्यान में रखने के लिए कॉन्सेप्चुअल स्टेज से आर्किटेक्ट के साथ एचवीएसी कंसल्टेंट और भी काफी बाकी सारे कंसल्टेंट्स जुड़े होने चाहिए, ताकि एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल कर सके, कहीं कोई गैप आगे जाके डिजाइन कंसिडरेशंस में ना दिखे या ना हो, जिससे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़े। अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे आउटडोर फ्रेश एयर यदि आप ज्यादा रखते हैं तो आपको ज्यादा पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। आप फिल्टर्स जो आउटडोर एयर, अगर आप बाहर की एयर अंदर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टली नहीं लेते हैं, आप फिल्टर्स का यूज करते हैं। किस टाइप का आप फिल्टर रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग और अपने बजट के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर करिए, तो आपको ये ज्यादा सुटेबल होगा कि हमें किस किस पॉइंट को अडॉप्ट करना है। बट हाँ, मैंडेटरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपको जरूरी है कि आप फुलफिल करें। अल्टीमेटली नेचुरल वेंटिलेशन के लिए भी आपको यहाँ पे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार जो मैंने कॉन्सेप्चुअल स्लाइड्स आपसे शेयर की है, मैं शायद थोड़ा सा आज फास्ट रहा हूँ। यदि आप में से किसी को कोई भी क्वेरी है तो इस स्लाइड के लास्ट में मेरा नंबर दिया है, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी है, मैं आपको डेफिनेटली जो भी हेल्प होगी वो मैं एडिशनली आपको प्रोवाइड करूंगा, ये मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये प्रेजेंटेशन आपसे शेयर किया जाएगा टीम की तरफ से, तो आप इसकी जो कॉन्सेप्चुअल स्लाइड्स है उसको शांति से 1-2 दिन के अंदर आप एक बार गो थ्रू करिए, और जो ईसीबीसी है या जैम रेटिंग के जो मैनुअल्स हैं उनको आप गो थ्रू करिए, खासकर जिन पॉइंट्स पे, जिन प्रिंसिपल्स पे मैंने बात की है आप उन्हें पढ़िए। जो भी कुछ मैंने कहा है मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में उससे समझाने की कोशिश की है। आप जब उन्हें पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीजें क्लियर रहेगी, और आपको फिर भी यदि कोई क्वेरी होती है तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
या फिर यदि आपके पास कोई ऐसी क्वेरी है जो आप अभी पूछना चाहते हैं तो आप रेज कर सकते हैं, अदरवाइज लास्ट में हम सब आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू कौशल जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही पेशेंस के साथ पूरे एनर्जी, डे लाइट और फ्रेशर क्रेडिट्स को एक्सप्लेन किया, एंड यू हैव आल्सो कवर्ड दैट हाउ ईसीबीसी इज रिलेटेड टू जेम। तो एक बात जी तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, जैसा कौशल जी ने भी बताया कि देखिए ईसीबीसी के अंदर मोस्टली बिल्डिंग एनवलप, एनर्जी, डे लाइट, फ्रेश एयर और लाइटिंग से रिलेटेड क्रेडिट्स हैं, एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड क्रेडिट्स हैं। तो ईसीबीसी, अगर आपकी बिल्डिंग ईसीबीसी कंप्लायंट है तो वो एनर्जी, लाइटिंग, डे लाइटिंग, फ्रेश एयर, बिल्डिंग एनवलप और एयर कंडीशनिंग वाले क्रेडिट्स को फुलफिल करती है 100%। लेकिन ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स में, जेम में, लाइटिंग, डे लाइटिंग, फ्रेश एयर, एयर कंडीशनिंग और इनके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे वाटर एफिशिएंसी है, सस्टेनेबल मटेरियल परचेज है, वेस्ट मैनेजमेंट है, डे लाइटिंग है, ह्यूमन कंफर्ट है, फायर एंड लाइफ सेफ्टी है। तो इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो ईसीबीसी के बियॉन्ड है। तो अगर आपकी बिल्डिंग ईसीबीसी कंप्लायंट है तो इसका मतलब ये है कि वो जेम के काफी सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है, एनर्जी, लाइटिंग, डे लाइटिंग, फ्रेश एयर, एयर कंडीशनिंग एंड ऑल, बिल्डिंग एनवलप। लेकिन इसके अलावा भी जेम में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अलग से अप्रोच करने पड़ते हैं। तो अगर आपकी बिल्डिंग जेम कंप्लायंट है तो आपकी बिल्डिंग ईसीबीसी कंप्लायंट तो होगी ही होगी डेफिनेटली। लेकिन अगर ईसीबीसी कंप्लायंट है तो जेम कंप्लायंट होने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स और फुलफिल करनी पड़ेगी, जैसे वाटर, वेस्ट, ह्यूमन कंफर्ट, फायर एंड लाइफ सेफ्टी, मटेरियल्स एंड ऑल। तो ये पूरा इस डिस्कशन का क्रक्स है। So thank you so much, Kaushal. You were very busy today, and we understand that you were, I mean, you were on leaves, sort of. But आपने थोड़ा टाइम निकाला और आपने हमें डे लाइट और एनर्जी और फ्रेशर क्रेडिट्स के बारे में एक्सप्लेन किया, और बहुत पेशेंटली आपने एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच। इट वाज माय प्लेजर सर, थैंक यू सो मच सर। जी जी। So Shubha, now I would request you to please start your presentation and give a brief idea of अदर क्रेडिट्स ऑफ एसोचैम जेम ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। तो कौशल जी ने लाइटिंग, एनर्जी, डे लाइटिंग, फ्रेश एयर और ईसीबीसी को फुलफिल को कंप्लीट किया, और बाकी जो क्रेडिट्स हैं जैसे गवर्नमेंट कंप्लायंसेस जो हैं, मटेरियल्स है, वाटर है, ह्यूमन कंफर्ट है, इसके बारे में आई वुड रिक्वेस्ट शुभा दैट यू कैन कवर एज सुन एज पॉसिबल। इस बीच में आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द अटेंडीज, आई एम रियली ग्लेड टू सी दैट अराउंड 400 प्लस अटेंडीज आर स्टिल listening to us. So thank you so much for your patience. I would request all the candidates to please register for GEM Certified Professional examination today. As today we are offering very discounted fee of 3,300 rupees plus taxes. कल से ये फीस दोबारा बढ़ जाएगी, 5,000 प्लस टैक्सेस हो जाएगी। तो आप आज रजिस्टर करें, और एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी आपकी प्रिपरेशन हो। और एग्जाम आप ऑनलाइन अपने घर से, ऑफिस से, कहीं से भी दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, बार बार दे सकते हैं। तो हमारा एम है कि आप ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबिलिटी को समझें, तो इसके लिए हम लोग एग्जाम कंडक्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। शुभा, प्लीज स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। सर Good, नीरज good. सर, एक क्वेरी मैंने पढ़ी है, जी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है कि जैम रेटिंग किस तरह से बेहतर है ग्रीहा और बाकी सारे रेटिंग से। तो आई होप ये आपने, और आप इसे प्लीज कवर कर लीजिएगा। हाँ, डेफिनेटली मैंने इसका वैसे आंसर चैट बॉक्स में दिया है। तो फ्रेंड्स ओके देखिए, ओके हाँ देखिए फ्रेंड्स, इंडिया में देखिए 2-3 प्रोग्राम और भी चल रहे हैं, जैसे लीड सर्टिफिकेशन है, आईजीबीसी है, गृहा है, जेम है। मैं क्योंकि जेम को बिलोंग करता हूं तो आई विल नॉट से कि जेम इज बेटर देन ऑल अदर प्रोग्राम्स, और जेम नहीं है तो कुछ नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। Mostly all the programs talk about sustainability, green building certification, energy efficiency, water efficiency. अब हर प्रोग्राम के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। जैसे आप 4 ब्रांड की गाड़ियां हैं, मारुति है, हुंडई है, महिंद्रा है, टाटा है, आपके पास सारे ब्रांड अवेलेबल है। सभी गाड़ियों में 4 पहिए होते हैं, सभी में इंजन होते हैं, सभी में कंफर्ट है, एयर कंडीशनिंग है, लाइटिंग है ना। सभी गाड़ियां आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती हैं। अब हर गाड़ी का अपना एडवांटेज है, किसी की माइलेज अच्छी है, किसी का लुक अच्छा है, कोई कंफर्ट में ज्यादा है, कोई सेफ्टी में ज्यादा है। तो ऐसे ही हर प्रोग्राम के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और अपने अपने क्लाइंट हैं, अपने अपने कस्टमर्स हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि एक आदमी के लिए लीड अगर बेटर है तो उसके लिए जेम भी अच्छा होगा, किसी के लिए जेम बेटर है तो आईजीबीसी भी अच्छा होगा, है ना। तो
डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जैसे लीड सर्टिफिकेशन है, तो लीड सर्टिफिकेशन टोटली यूएस बेस्ड है। आप लोग जो लीड सर्टिफिकेशन जिन्होंने पढ़ा है उनको मालूम होगा कि लीड के अंदर कई सारी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो टोटली यूएस बेस्ड है, जो इंडिजिनस नहीं है, जो इंडिया कॉन्टिनेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो वो हमारे लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन लीड के अपने क्लाइंट डेटाबेस है, लीड के अपने कस्टमर्स हैं। दूसरी बात, अगर आईजीबीसी की बात करें तो आईजीबीसी अगेन इट्स अ वेरी ओल्ड प्रोग्राम जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था 2002, 3, 4 के आसपास। आईजीबीसी जो है वो लीड के प्रोग्राम को उन्होंने एज इट इज 100% अडॉप्ट किया और आज भी वो उसी प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं इंडिया में। तो देखा जाए तो वो भी लगभग यूएस बेस्ड प्रोग्राम है। उसमें कई सारे ऐसे क्रेडिट्स हैं जैसे एफएससी सर्टिफाइड वुड है, सीआरआई सर्टिफाइड कारपेट्स है, ब्रांडेड और सर्टिफाइड वाटर फिक्सचर्स, लाइटिंग फिक्सचर्स आपको यूज करने हैं, आपको आरईसीज परचेज करने हैं, और कई सारे ऐसे क्रेडिट्स हैं जिनका इंडिया में इंडियन के प्रोजेक्ट्स में एज सच ज्यादा यूज नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो मुझे लगता है कि ऐसा है। गृह इज अगेन अ वंडरफुल प्रोग्राम। गृह इंडिजिनस प्रोग्राम भी है, ईसीबीसी पे भी बेस्ड है। गृह की अपनी लिमिटेशंस है, गृह के अपने क्लाइंट डेटाबेस है, तो हर प्रोग्राम के अपने एडवांटेजेस और अपने बेनिफिट्स हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू शुड रीड ऑल द प्रोग्राम्स, देन यू शुड जज दैट विच प्रोग्राम इज एप्लीकेबल टू विच प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट जिस पे लीड एप्लीकेबल है उस पे गृह भी एप्लीकेबल होगा, जरूरी नहीं है। जेम जिस पे एप्लीकेबल है उस पे लीड एप्लीकेबल हो, जरूरी नहीं है। हर एक कोई आदमी, अच्छा लीड जेम सर्टिफिकेशन का एक बेनिफिट ये है कि ये इंडिजिनस प्रोग्राम है, ईसीबीसी और एनबीसी पे बेस्ड है, तो इंडियन प्रोजेक्ट्स के लिए 100% सुटेबल है। जेम प्रोग्राम में फायर एंड लाइफ सेफ्टी भी हमने इंक्लूड किया है। हमने टिपिकल कैलकुलेशंस को हटा दिया है क्योंकि कैलकुलेशन में मैनिपुलेशन होता था और एक्चुअल प्रोजेक्ट में कुछ और हो रहा है और हम लोग रेटिंग कुछ और ले रहे हैं कैलकुलेशन में चेंज करके। कैलकुलेटर्स और कैलकुलेशन को हमने टोटली हटा दिया है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक लेमैन को भी समझ में आएगा। साइट पे जो प्रोजेक्ट टीम काम करती है उसको पढ़ करके समझ में आ जाएगा कि उसको क्या करना है। ये एक सबसे बड़ा गैप था बाकी प्रोग्राम्स में, तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया है। फीस जो है वो जेम सर्टिफिकेशन की वो बाकी सभी प्रोग्राम से लगभग 30 से 40% तक कम है, बिकॉज एसोचैम इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा एम इस प्रोग्राम से रेवेन्यू मेकिंग नहीं है, इसीलिए हमारी फीस जो है वो बाकी प्रोग्राम से 30 to 40% कम है। और जहां तक गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की बात है, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया है, जैसे मैंने आपको अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया था। बाकी महाराष्ट्र, केरला, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और ये ऐसे स्टेट्स हैं अगले 6 से 7 महीने में इन सभी स्टेट्स में ग्रीन बिल्डिंग प्रोग्राम इम्पैनल्ड होगा। ड्राफ्ट में ऑलरेडी हमारा नाम आ चुका है। तो वो एफआर इंसेंटिव्स वाला बेनिफिट भी कोई बेनिफिट अब नहीं है, वो भी इस प्रोग्राम को एप्लीकेबल है। तो बेसिकली नाउ यू कैन इंसिस्ट द क्लाइंट्स टू गो फॉर जेम सर्टिफिकेशन बिकॉज इट हैज ऑल द बेनिफिट्स, इट इज लेस व्हाट शुड आई से कि लेस कॉम्प्लिकेटेड। सो नाउ यू कैन गो फॉर जेम सर्टिफिकेशन एज वेल। आपकी और भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप बताइएगा। आपके पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको आपको लगता है कि जेम सर्टिफिकेशन कराना है, आप क्लाइंट से हमें कनेक्ट कराइए, हम उनको कन्विंस करेंगे, उनको समझाएंगे आपके बिहाफ पे और उस प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करके वी विल हैंड ओवर दैट प्रोजेक्ट टू यू। अब आप उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कीजिए। तो अगर आपको लगता है कि कोई मार्केटिंग मीटिंग करनी है, कोई बिजनेस डेवलपमेंट मीटिंग करनी है जिसमें आप चाहते हैं कि हम आपके साथ आगे होकर के क्लाइंट से मीटिंग करें, तो वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। हम क्लाइंट से मीटिंग करेंगे और हम उनको कन्विंस करेंगे कि क्यों उनको जेम जाना चाहिए, और वो प्रोजेक्ट आपके साथ आपके सुपरविजन में प्रोजेक्ट सर्टिफिकेशन होगा। हम आपको उसमें पूरा हैंड होल्डिंग करेंगे, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे साइट पर जाना है, कैसे मीटिंग्स करनी है, ये सारी हैंड होल्डिंग और हेल्प हम आपको करेंगे, विच नो अदर प्रोग्राम्स कैन हेल्प यू, कैन एक्सटेंड यू। तो ये सब एडवांटेजेस हैं हमारे प्रोग्राम के साथ। शुभा, सॉरी आई हैव टेकन योर टाइम, सो ओवर टू यू शुभा। No, this is our time. No, this is everybody should get benefited. Like at the end of the day, everybody wants to know why GEM and even if these principles are what we are going to share here or what you are showing here. सबको शुभा, समझना सॉरी भी है कि if you can switch off your video, your internet quality will improve. Thank you. okay, right now it's fine. Yeah, okay. So a lot of things has been already cleared out. So I'll take like I'll not take much time because it's almost you have been patiently here for like 2 to 3 hours, 2.5 hours, and बहुत सारे बात हो चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी हो चुका है. So it's just the time that you just get through this thing really quick. So most of the technical sessions, energy, and a lot of things, the calculations related things has been uh, described by Kausalji very elegantly and very simplified way. In a 30 minutes, he explained everything. So the
next 20 to 30 minutes I will try to cover all the things. Okay. So यहाँ पे fire and life safety and sustainable buildings is very essential in GEM programming, which is not anywhere in any other rating system so far. Because we think that fire and life safety is compromised enough, and it should be a part of sustainability as well. So, some people are requesting for 5 minutes break because it has been a long time. Anyway, मैं उसको धीरे-धीरे से बात करूंगा अभी. I'll not take much time. कि essential 3 construction management best practices is there, where we are discussing about during the constructions. There are some requirements in NBC 2016 volume 2. You can see here. There are certain descriptions. It's already there, and it's thing that is just a part of implementation. You see, when you're saying that something should be essential, something should be mandatory, it's not that we are making something new. It's already there in the National Building Code or fire lab safety regulations or some other kind of approvals. But we are just trying to reiterate the fact कि ये चीज होनी चाहिए. आप लोग अगर भूल रहे हैं तो इस चीज को प्लीज कीजिए. जैसे आपको सॉइल इरोजन, हम लोग कुछ बनाते हैं तो इसको इरोज कर देते हैं. सॉइल को ऊपर का जो लेयर है उसको निकाल देता है. इट माइट बी फर्टाइल सॉइल, इट माइट बी अ गुड सॉइल, but we just don't think about it. We'll just keep it out and we'll just throw it someone. So हम just इसको आपको realize कराते हैं कि you can protect this soil, you can put somewhere else and you can again use it later. Maybe for the landscaping, maybe for backfilling, maybe for whatever purpose. Don't throw it out completely. So ये intent है. This is the intent of this principle. And इसके तहत ये सब मेथोडोलॉजी से, बहुत सारे मेजर से कि आप कैसे आप बचा सकते हैं सॉइल को, कैसे थ्रू some kind of burnings, earth burns, and some kind of sedimentation control plans, which is already in the NBC itself. It's nothing new that we are saying here from our side. And this is now we are coming to the propagating passive design strategies. ये हमारा culture में in Indian tradition it has been there. Propagating passive design. Passive design is nothing new in Indian continent, and too many buildings designed today are dependent on non-renewable energy sources, like you can see here. So आप ये देख सकते हैं, this is all our passive design strategies. Passive design strategies means यहाँ पे आपका हवा महल है. For example, it is using air to cool it, right? There is no air conditioning inside, but this place is completely cool inside. How it is there? क्योंकि इन्होंने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि वो जो हवा चल रहा है, इवन जयपुर जैसी जगह में जहाँ पे हम सोचते हैं कि बाहर जो सेल्सियस टेम्परेचर जो है इट मस्ट बी लाइक 50 डिग्री और 45 50 और मोर समटाइम्स, उस जगह में अंदर ठंड रखना चीजों को, इट्स नॉट प्रीटी इजी, राइट? आप पानी को यूज कर रहे हैं, जल महल में यूज कर रहे हैं. आप रिन्यूएबल एनर्जी एमपी में यहाँ पे एक मंदिर दिया गया है ऊपर, सन 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 टेम्पल कोणार्क उड़ीसा, राइट? वहां पे अभी ठीक है, अभी टूट गया है, but the original temple it used the kind of intent, the intensity, the rays of solar rays, right? जिसका solar diagram अभी daylighting की बात कर रहे थे कौशल जी. So you can see that the passive design through the orientations, through proper intent, lot of things can be maintained, lot of things can be done just by the passive design. जहाँ पे हम एनर्जी की बात करते हैं कि हम एनर्जी बचाएंगे, B3 स्टार रेटेड, B5 स्टार रेटेड लगाएंगे कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बट before that we must think that can we do some kind of orientations which will use certain technologies. Like अभी यहाँ पे देख रहे हैं हमारा आजकल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है फॉर सोलर पाथ डायग्राम्स. ठीक है, कहाँ से समर में कैसे आता है सूरज, विंटर में कैसे आता है सूरज, रेनी सीजन में कैसे आता है, कहाँ से आता है, where the intensity is more, where the intensity is harsh. We have all the details available right now technically, right? So सिमिलरली विंडरोज डायग्राम, हमको मालूम है कोई जगह में कोई एल्टीट्यूड हमारे पास है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वी नो दैट, एंड इन दैट पर्टिकुलर लोकेशंस वेयर वी कैन गेट द विंड्स, कहाँ पे नेचुरल, कहाँ से हमारा ज्यादा हवा आता है, वेस्टर्न से आता है कि ईस्ट से आता है कि किस तरह से आता है, कहाँ पे किस तरह से सेटिंग करनी चाहिए, कहाँ से किस तरह का विंडोज करनी चाहिए. सो वी हैव ऑल दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल विथ अस, वी हैव all kind of expertise available with us. So architects can beautifully design passive design. इससे क्या होता है, that is we give it almost 5 points rating देना चाहिए. ठीक है ना? उसके बाद हम बताएं लैंडस्केप के बारे में. ठीक है, which is required as well, right?
So what is the intent of this principle? 4 points we are giving it, like maximizing natural landscape area on plants and native or adapted to drought tolerant species. इसका intent क्या है समझिए. I'm not going to the calculations. Calculations you guys can do pretty well, क्योंकि आप already in this field, so I don't have to go through the calculations exhaustively. इसका इंटेंट मैं समझाता हूँ. इसका इंटेंट ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अभी बैठा हूँ उड़ीसा में, ठीक है. मैं यहाँ पे कोई ऐसा पेड़ लगाऊंगा जो कश्मीर में होता है, लेकिन एप्पल ट्री मैं अपने घर में लाके एप्पल ट्री लगाऊंगा, ठीक है. अभी वो चीज होगा क्या? that is not a native plant, that's not adaptive also, it's not also DTA, so पानी कम भी नहीं लेगा, तो यहाँ पे आएगा. मैं लगा दिया. लगाने के बाद क्या करना पड़ेगा? If I need to save it, if I need to preserve that apple tree, then I must put some extra amount of resources which is illogical, which is not required. So when you are making some kind of architect, some kind of campus, some kind of design throughout your place, maybe it's your home, maybe it's a campus, and maybe whatever it is, housing complex, the landscape should be designed such a way that we will use most of the area for landscape. नंबर 1. नंबर 2, जितना लैंडस्केप है उसका एक परसेंटेज हमको नेटिव प्लांट लगाना है, ठीक है. दैट इज the intent of it. With this kind of geriscaping, with this kind of idea, we can make very beautiful landscapes, and we can also preserve water, we can preserve energy, we can preserve the soil, we can preserve a lot of things around that. That is the intent of this principle. So, इसका चीज क्या है? Preserve plant and trees on site. On site preservation of developed trees and plantations of more native or adaptive trees. Fair enough, क्योंकि हम कुछ जगह खरीद लिए, वहां पे घर बनाने जा रहे हैं, वहां पे एक पेड़ है साइड में, अगर हम उसको बचा सकते हैं बाय सम वे, वी विल ट्राई टू कीप इट प्रिजर्व्ड इट, ठीक है. अगर बचा नहीं सकते हैं, इफ वी कैन नॉट प्रिजर्व इट, वी मस्ट कट इट, देन उसके बदले में हमको कुछ और लगाना चाहिए पेड़. पेड़ ऑफ द सिमिलर स्पेसीज. ऐसा नहीं कि हमने banyan ट्री को निकाल दिया, उसके जगह में तुलसी का पौधा लगा दिया, वो नहीं चलेगा सर. आप सिमिलर स्पेसीज कोई और जगह में लगा सकते हैं. सो दिस इज द इंटेंट कि आप पेड़ मत काटिए. अगर काट रहे हैं तो यू शुड बी responsible enough to plant trees somewhere else, right? So of some equivalent amount. So this is there are some kind of calculations there, so I will not go into the calculations, because I think after 2.5 hours you are exhausted to make any kind of calculations right now. यहाँ पे क्या है कि high albedo materials, roof and non-roof. Roof and non-roof में क्या होता है? We are using high albedo materials. High albedo materials means high solar reflective index. The kind of materials or the kind of surfaces that reflect solar rays. क्यों क्या होता है? कभी कभी फॉर एग्जाम्पल you can see here, कभी कभी क्या होता है, we keep some kind of concrete or some kind of roadways or some kind of roof, जिसमें heat क्या होता है, heat trapped हो जाता है. We have some, let's say we have 2 skyscrapers side by side, और उसके अंदर बीच में एक आपका कंक्रीट का एक हमने बना दिया रास्ता, स्ट्रीट बना दिया, and when the sunrays come there, it might get trapped there, right? It will not go easily even after 5 p.m, 6 p.m, even after 7 p.m also. Sometimes that area will feel very much like heat up, right? In summer seasons, क्योंकि वो जो solar rays है, it is not able to escape itself into the air. So हमने क्या किया, उस जगह में ऐसे पेपर ब्लॉक लगा दिया, so that it can go into the soil at least, or we can make some kind of solar reflective material जो इस चीज को solar rays को it will not absorb it, it will reflect it immediately, like white coated paint on the surface of your flat or something, आपके घर के ऊपर. और या आप ये कर सकते हैं, रूफटॉप में गार्डन कर सकते हैं. तो स्मॉल स्ट्रेटेजी, स्मॉल थिंग्स, ये पहले हमारे जमाने में होता था. हमारे जमाने में मतलब हमारे ग्रैंडफादर के जमाने से होता था वो सब चीजें. पहले जमाने में हमारे जो रूफ होते थे वहां पे कुछ ना कुछ पेड़ लगाते थे, मतलब पेड़ मतलब क्लोरल, द सैपलिंग्स काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? सो इसमें क्या होता है, हीटअप नहीं होता था, हमको एसी की जरूरत नहीं पड़ती थी उस टाइम में. आजकल डेट में जरूरत पड़ती है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ हीट ट्रैप्स आल्सो दैट वी आर क्रिएटिंग बिकॉज ऑफ दिस आर्टिफिशियल काइंड ऑफ irresponsibility that we are making. So थोड़ा सा सोच के in that direction, so we can be sustainable in that direction as well. उसके बाद हम बात करेंगे पानी की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज एंड रीयूज. So what we are trying to do here is we are trying to make some rainwater storage system, recharge speed to cater to both roof and non-roof rainwater. जो भी पानी आ रहा है उसको बचाओ, उसको यूज करो. अगर यूज नहीं कर सकते या फिर अगर बचा नहीं सकते, क्यों बचा नहीं सकते? Sometimes your groundwater table is very high. Okay, so उस एक सेकंड, suppose your groundwater table is very high,
एंड ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। सो उसके लिए भी हमने ऑप्शंस बनाए। यू कैन सी नंबर 6, उसमें एक स्टोरेज सिस्टम टू कैटर टू रेन वाटर फ्रॉम रूफ सर्फेसेस ओनली एंड रीयूज फॉर लैंडस्केप और फ्लशिंग और डोमेस्टिक एप्लीकेशन आज एप्लीकेबल। वहां पे आप नॉन रूफ सर्फेसेस को रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि द वाटर टेबल इज वेरी मच हाई। सो इट मस्ट ऑल्सो बी practical. That's what Neeraj was mentioning few minutes before कि जेम में हमने जो भी चीज, जो भी प्रिंसिपल्स हमने बनाया है, हम जानबूझ के उसको प्रैक्टिकल बनाया है, क्योंकि इट्स नॉट दैट विल मेक सम काइंड ऑफ बेंचमार्क्स कि ये कीजिए आपका सस्टेनेबिलिटी होगा, ऐसा नहीं है। वी आल्सो हैव टू थिंक दैट इट हैज टू बी प्रैक्टिकल एनफ। प्रैक्टिकलिटी का आपको और एक एग्जांपल मैं अभी दिखाऊंगा। दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल, राइट? Install low flow water fixtures. Someone is asking what is the difference between the rating system. Difference, this is a clear difference. यहाँ पे आप देखिए, install efficient water fixtures with flow rates not more than the values listed below, 1 point for each product. What happens is when you go for making some kind of room, आप कंट्रैक्टर को दे देते हैं, घर बनाने के लिए गए और आपने बताया कि ठीक है मेरा वाटर क्लोजेट बना दो। सो उसको बहुत इजी रहता है अगर हम जाके ये बोल दें कि आप इस टाइप का फसेट लेके आओ, ये फ्लश रेट होना चाहिए, ये कटसीट पे मिल जाता है, ये मार्केट में मिल जाता है, लो वाटर फिक्सचर्स बहुत इजीली मिल जाता है। आप वो चीज को परचेज किए, लगाए, हमने इंस्पेक्ट किया, देखा, ठीक है, वेरीफाइड कर दिया, हमने आपको पॉइंट दे दिया। इट इज वेरी मच प्रैक्टिकल। लेकिन मैं अगर इस जगह में आपको ये बोलूंगा आप 40% सेव करके लाइए, तो पहला चीज ये है कि 40% कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए एक बेसलाइन जाएंगे। वो बेसलाइन माइट और माइट नॉट बी एप्लीकेबल फॉर दैट एग्जैक्ट दैट एरिया, ठीक है? क्योंकि हम जब बेसलाइन बनाते हैं, हम लोग तो ऐसे नहीं बनाते हैं कि राजस्थान के लिए अलग बेसलाइन है, उड़ीसा के लिए अलग बेसलाइन है, तमिलनाडु के लिए अलग, नहीं ना, एक ही बेसलाइन बना देते हैं। या फिर वो कहीं से कोई स्टैंडर्डाइज को कहीं से इंपोर्ट करते हैं, यूएस ईपीए का जो स्टैंडर्ड बेसलाइन है कि टार्फ का इतना है, इसका उतना है, उसका उतना है। So this calculation sometimes lead to if manipulations that what we are talking about. Manipulation means it's not कि जानबूझ के कोई कर रहा है, ये कि वो कभी कभी प्रैक्टिकल नहीं होता, तो जो वैल्यूज हम डालते हैं बेंचमार्किंग के कैलकुलेशंस के टाइम, इट माइट गो रॉन्ग समटाइम्स, राइट? तो उससे अच्छा है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर दें फॉर द पॉइंट ऑफ यूजर, फॉर द पॉइंट ऑफ हु इज मेकिंग दिस प्रोजेक्ट, फॉर द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट ओनर। उसको समझाना इजी रहते हैं, सर ये लगा दीजिए, बस खत्म ना। तो this is what we are talking about, simplified. The intent is same, the approach is same, but the practicality is different, right? So ये छोटे छोटे चीजें होते हैं। ऑनसाइट ट्रीटमेंट ऑफ ग्रे एंड ब्लैक वाटर एंड रीयूज फॉर फ्लशिंग। यहाँ पे हमने ग्रे एंड ब्लैक वाटर एंड रीयूज फॉर फ्लशिंग, सब तो जो भी पानी निकलता है ग्रे एंड ब्लैक वाटर व्हाटएवर इज देयर, वी आर ट्राइंग टू रीयूज इट फॉर फ्लशिंग पर्पसेस। उसके लिए हम परसेंटेज किया है, अगर 75% किया तो कुछ पॉइंट्स मिलेगा, अगर आप डुअल प्लम्बिंग लगाए तो कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो as straightforward as that. इरिगेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे ट्रीटेड वाटर, रेन वाटर फॉर लैंडस्केप टू रिड्यूस एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल लैंडस्केप वाटर डिमांड, 1 पॉइंट। अगर आप 75% ऑफ से टोटल लैंडस्केप वाटर डिमांड आप अगर ट्रीटेड वाटर से करते हैं, रेन वाटर से करते हैं, तो 2 पॉइंट्स। और उसके अलावा आपके स्ट्रेटेजीज में स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स, किसी तरह का कंट्रोल से आप लगा रहे हैं तो 1 पॉइंट फॉर एनी 3 स्ट्रेटेजीज, तो टोटल 3 पॉइंट्स। तो as simple as that, ओके। ड्रिप इरिगेशन आपने लगा दिया और 2 चीज कुछ लगा दिए, अपने आपका 1 पॉइंट लगा मिल गया, ठीक है? इजी है ना समझने के लिए। सो मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एंड वाटर कंजप्शन, सेम थिंग। एनर्जी मीटर्स, आप अगर इसमें से कोई भी एनर्जी मीटर लगाते हैं, 2 पॉइंट्स फॉर 4 मीटर्स, 3 पॉइंट्स फॉर 6 मीटर्स, ये हो गया एनर्जी मीटर का, ये हो गया वाटर मीटर का, हो गया काम खत्म। और आप समझ गए कि आपको करना क्या है, हमारा सस्टेनेबिलिटी का इंटेंट क्या है। हमारा सस्टेनेबिलिटी का इंटेंट ये नहीं कि आपसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करवाए या ज्यादा कैलकुलेशंस कराए। हमारा पर्पस, द इंटेंट बिहाइंड इट इज यू शुड अप्लाई इट ऑन फील्ड at less cost, less time, and productivity should increase. That's what we are talking about here in GEM building rating system. ठीक है? So post occupancy waste management is the same thing. आप सेपरेट वेस्ट बीन्स पर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग कर दीजिए, हो गया 2 पॉइंट्स। सेंट्रल वेस्ट कलेक्शन हो गया था, अनदर 2 पॉइंट्स, टोटल हो गया 4 पॉइंट्स। सो आप रेफरेंस गाइड इज फ्रीली अवेलेबल इन द वेबसाइट, सो यू कैन गो थ्रू इट। अगर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू कैन आस्क अस एनी टाइम। I'm going fast because we don't want to spend much time, and almost 2 to 3 hours you guys have been listening patiently. Thank you for that. So on-site conversion of organic waste, यहाँ पे क्या हो रहा है, we are trying to make the same thing, but organic waste को हम on-site treat कर रहे हैं तो हमको points मिल रहा है, ठीक है? This is the intent behind this principle 15. Principle 20,
प्रिंसिपल 20 में क्या है, आपका जो मेटेरियल्स आप यूज करते हैं, वट एवर मेटेरियल्स यू आर यूजिंग फॉर दिस बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड एवरीथिंग, वॉल्स, रूफ्स, फ्लोर्स, विंडोज एंड एवरीथिंग, if you are using facade glass, door and window glass with a recycled content of more than 15%, it is written in the cut sheet itself, आपको मिल गया 2 points, ठीक है। use PPC cement for masonry and plaster work. Why PPC? Because PPC has a recycled content, so 50% 1 point, 75% 2 points. fly ash bricks or AAC blocks, ठीक है। और सिमिलर प्रोडक्ट्स फॉर ब्रिक वर्क, 40% ऑफ ब्रिक वर्क अगर फ्लाई एश आप यूज करते हो 1 पॉइंट, 80% 2 पॉइंट्स। आप बोलेंगे कि फ्लाई एश का स्ट्रेंथ नहीं है, ये स्ट्रक्चरली ये है, तो हम लोग आपको 100% यूज करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। 40% द पार्टीशंस माइट बी यूज्ड देयर, व्हेरेवर एप्लीकेबल, व्हेरेवर पॉसिबल वी कैन यूज इट। एंड फ्लाई एश का स्ट्रेंथ इतना भी कम नहीं है आजकल, बहुत सारे अच्छी तरीके से द फ्लाई एश ब्रिक्स विद गुड स्ट्रेंथ इट्स कमिंग एंड एएसी ब्लॉक्स आर आल्सो अवेलेबल, सो वी कैन यूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज। आपके पास अगर कुछ इनोवेटिव अदर स्ट्रेटजीज यू आर यूजिंग, दैट आल्सो यू कैन डॉक्यूमेंट इट हियर एंड विल टेक इट इनटू कंसीडरेशंस। सो द इंटेंट शुड बी fulfilled. What is the intent of this principle? Utilization of alternatives of basic materials. आप virgin materials को यूज करने के बजाय आप अगर कोई recycle content यूज कर रहे हैं, then this is the content is fulfilled, as simple as that. Okay. लोकल सोर्सिंग में हमने क्या किया, लोकल सोर्सिंग में वी मेड 3 काइंड्स ऑफ बेंचमार्क्स फॉर लोकल सोर्सिंग, क्योंकि आपका सैंड, स्टोन, एग्रीगेट्स, ब्रिक्स, पेवर ब्लॉक्स, कंक्रीट, ये सब चीज जो होती है 250 किलोमीटर के अंदर बहुत इजीली मिल जाती है एनीवेयर इन इंडिया, राइट। एनीवेयर इन इंडिया यू कैन गेट। आपको स्टोन्स के लिए बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा, अगर आप दूर से ले रहे हैं तो गलत है, ठीक है। तो 250 किलोमीटर के अंदर अगर आप ये सब चीज ले रहे हैं यूजुअली, तो 2 पॉइंट्स मिल गया आपको। सीमेंट, ग्लास, वुड प्रोडक्ट्स एंड टाइल्स, इफ यू आर गोइंग 550 किलोमीटर के अंदर आपको मिल जा रहा है एक्सकैवेटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड, आपको मिल गया 2 पॉइंट्स। That is the definition of local. Local, you cannot say that 1000 kilometer is local. No, it is dependent on the material type also. आपको अगर कोई चीज 250 किलोमीटर के अंदर सैंड मिल रहा है, why should you go for 550? That is not the way it should be. So लोकली सोर्स स्टील के लिए शायद आपको थोड़ा दूर जाना पड़े, क्योंकि स्टील का प्लांट हर जगह में नहीं मिलता, इसलिए हमने उसको और थोड़ा बढ़ा दिया। हमने बोल दिया ठीक है आप जाइए 850 किलोमीटर तक, उसके अंदर अगर स्टील आपका मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री हो रहा है उसके अंदर से आपको इसे खरीद रहे हो तो ओके, गुड एनफ, ठीक है। तो इससे क्या होता है आपका, एक तो इट्स प्रैक्टिकल, दूसरा चीज है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी सही है, लॉजिकल है यहाँ पे। सो दिस इज द काइंड ऑफ लोकल सोर्सिंग दैट वी मेड। judicious use of hardwood and softwood, the main intent is that don't cut trees. अगर आप उसके बदले कोई MDF यूज कर रहे हैं, LDF यूज कर रहे हैं, डोफ्रेंस यूज कर रहे हैं, then you get point for that. If and do not use urea formaldehyde resin on the top of your any kind of furniture or everything. It is quite आजकल मिल रहा है without urea formaldehyde resin, we are getting engineered wood products मिलता है। मार्केट धीरे धीरे इसका बढ़ रहा है, पहले हर चीज में डाल देते थे फॉर्मल्डिहाइड, बट राइट नाउ इट इज डिक्रीजिंग। रैपिडली रिन्यूएबल मटेरियल्स, अगर कोई तरीके से आप कुछ बना रहे हैं, स्ट्रॉ, कटन, व्हीट, नेचुरल रबर, बम्बू, कर्क, इस सब से बना रहे हैं तो आपके लिए पॉइंट मिलता है। तो बेसिकली दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन अ ग्लिम्स, दैट आप रिसाइकल यूज कीजिए, आप ग्लास रिसाइकल यूज कीजिए, आप एसी ब्लॉक्स, फ्लाई एश ब्लॉक्स, दिस इज अ बैम्बू मेड काइंड ऑफ सोफा एंड एवरीथिंग। इट ऑल्सो डज नॉट लुक बैड, राइट। एस्थेटिक तो लग ही रहा है, ऐसे लोग सोचते थे कि अरे यार हम अगर इस तरह का रैपिडली रिन्यूएबल से अगर सामान लेंगे तो देखने में शायद अच्छा ना लगे, ऐसी बात नहीं है। आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल भी जाता है मार्केट में आजकल देखने में अच्छा वाला। सो finally I'll come to activities for corporate social responsibility. Maybe if you remember in the beginning of the slide, in the beginning of the program, Neeraj ji mentioned about UN SDGs, right? तो यहाँ पे वही चीज की बात हो रही है, अगर आपका कंपनी हो या आप हो कोई भी, if you are somehow making some kind of contribution towards this UN SDG goals, कोई भी चीज की तरफ, जैसे प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में आप अगर दे रहे हो, नेशनल हेरिटेज में भी आप कुछ कर रहे हो, कुछ आप कर रहे हो, हैंडीक्राफ्ट टुवर्ड्स कुछ कर रहे हो, यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेड, देन वी गिव रिकॉग्निशन फॉर दैट। ठीक है आप कर रहे हैं तो सपोर्टिंग एविडेंशियल प्रूफ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर्स, यू गेट अ पॉइंट। दीज आर द सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स, 17 थिंग्स, ठीक है ना। तो हम ग्रीन बिल्डिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली बिल्डिंग स्पेसिफिक सस्टेनेबिलिटी के साथ हम बंधे हुए हैं, नो, वी कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग नो पॉवर्टी, वी कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग जीरो हंगर।
apart from that, GEM certified professional, somebody was asking what is the benefit of GEM CP. A GEM CP certified professional should be involved in this process. 1 point, two people involved in the 2 points. This is in terms of only this is the only in terms of 2 pointing systems. And apart from that, agar koi GEM CP hai, they want to, it is already mentioned before, if they want to have some kind of project, if they have some kind of project, they can approach us. Apart from that, if let's say some university is there and they have the students who are GEM CPs, and the university is going from GEM certifications program, the students who can make the documentations, they can be a part of the GEM documentation process and consultancy process, so that they will get a free hand experience of the program. We don't have any problem with that. Any kind of auditing, any kind of related to this kind of sustainability and GEM auditing programs, those GEM CPs can be involved with us. ठीक है, तो आपके पास अगर और कोई ऑप्शन है, अगर if you have any kind of suggestion or feedback, you can directly give a mail to Amit Kumar Sharma ji. He is here. Thank you Amit for being here. Rohit Bhasin, thank you. And आप हम सबको email कर सकते हैं, हम directly will try to answer it. Okay, thank you very much. Thank you, Shubha. Thank you so much. So friends, once again, I mean, there are certain questions I would like to answer. तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं. तो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ ने पूछा है कि अगर हम जेम सर्टिफाइड किसी प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं तो हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा. तो फ्रेंड्स, से इफ यू वांट टू रजिस्टर अ प्रोजेक्ट under GEM certification, so what you can do is you can register the project online on our website, or we have the offline registrations also. So if you have certain queries, certain potential clients, अगर आपको लगता है कि कोई potential client है जिनको हमें green building certification के लिए pitch करना चाहिए, so you can share the details with us, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग physically या virtual जैसा भी possible है, हम लोग आपके साथ उन क्लाइंट से मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके उनको कन्विंस करेंगे. सबसे पहली बात तो ये कि उनको ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के बारे में समझाना है. तो अगर आपको लगता है कि यू कैन डू इट, दैट्स ग्रेट. इफ यू वांट अस टू डू दैट फॉर यू, वी विल बी हैप्पी टू डू दैट. हम लोग उनको ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे, इनके बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे कि क्यों उनको ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन जाना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, है ना. तो ये सारा कुछ कन्विंस करने के बाद हम उनको बताएंगे कि भाई उनको, तो जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि किसी क्लाइंट को जेम सर्टिफिकेशन के लिए पिच करना है, तो हम उनको ये सारा समझाने के बाद जेम सर्टिफिकेशन के बारे में पिच करेंगे. हम उन प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करेंगे और उस प्रोजेक्ट के लिए जो कंसल्टेंसी है वो आप ही लोग करेंगे. जो भी लीड देते हैं आप ही लोग उस प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी को करेंगे. प्रोजेक्ट एक बार रजिस्टर होने के बाद साइट पे क्लाइंट के साथ कैसे मीटिंग करनी है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, और कैसे आप रिपोर्ट्स बनाएंगे, इन सब में भी हम आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे. हमारे पास एक फुल फ्लेजेड टीम है जो आपकी इन सब चीजों में हेल्प करेगी कि आपको कैसे डॉक्यूमेंटेशन करके रिपोर्ट बनाना चाहिए. आप ये रिपोर्ट एसोचेम को सबमिट करेंगे. एसोचेम उन रिपोर्ट्स को फिर थर्ड पार्टी रिव्यूअर्स के पास रिव्यू करने के लिए भेजता है, और रिव्यू करने के बाद फिर हम साइट पे विजिट करते हैं. विजिट करने के बाद अगर कोई इश्यूज नजर आते हैं तो उन इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं. क्लाइंट उन इश्यूज को रेक्टिफाई करता है. रेक्टिफाई करने के बाद दोबारा रिपोर्ट सबमिट होती है जो आप करते हैं एज अ कंसल्टेंट, और फिर हम एसोचेम जो है उसको रेटिंग अवार्ड करता है. तो ये पूरा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में स्टार्ट से लेकर के क्लाइंट मीटिंग से लेकर के रेटिंग मिलने तक वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर देयर टू सपोर्ट यू, गाइड यू ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट. इसके लिए आपको जेम सर्टिफाइड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन देना है. अगर आपको प्रोजेक्ट्स को जेम के अंडर में करना है तो आपको जेम सर्टिफाइड प्रोफेशनल एग्जाम देकर के जेम सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनना है. इसका बेनिफिट ये है कि ऐसा करने से आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं. इसमें एक पॉइंट्स टेबल है, जैसे मैंने बताया था कि आप अगर 105 से ज्यादा पॉइंट अचीव करते हैं तो प्रोजेक्ट जेम 5 रेटेड हो जाएगा. तो अगर आप जेम सर्टिफाइड प्रोफेशनल हैं तो आपके प्रोजेक्ट को 2 पॉइंट मिलते हैं. ये पॉइंट उसकी पॉइंट्स टैली में हेल्प करते हैं उसको रेटिंग लेने में. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको ये करना है. अच्छा, प्रोजेक्ट की फीस मैंने आपको बता दी है कि जो प्रोजेक्ट की फीस होती है वो स्क्वायर फीट बेसिस के ऊपर होती है, और जेम सर्टिफिकेशन की जो फीस है वो बाकी सारे प्रोग्राम से 30 से 40% तक कम है, बिकॉज वी आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और हमें इन प्रोग्राम से रेवेन्यू मेकिंग नहीं करना है. दूसरा बात, जैसे मैंने बताया, इसमें क्वेश्चन है कि क्या कोई भी एजेंसी इस तरह से रेटिंग देने के लिए अलाउड है. यस, अलाउड है. एसोचेम मैं आपको बता दूं, एसोचेम इज इंडियाज ओल्डेस्ट अपेक्स चैम्बर. एसोचेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड चैम्बर है और हम इस तरह के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाने के लिए एलिजिबल हैं. दूसरी बात, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सर्टिफिकेशन लेते हैं या किसी प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन लेते हैं,
सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, आप प्रोडक्ट के लिए भी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। ये जो सर्टिफिकेशन है ये पूरा वॉलंटरी है, कहीं से कोई फोर्स नहीं है, कोई गवर्नमेंट की लीगल बाइंडिंग नहीं है। दूसरी बात, एसोचैम जेम इज एम्पैनल्ड एंड सर्टिफाइड एंड एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर ग्रीन एक्स्ट्रा एफआर इंसेंटिव्स और अदर इंसेंटिव्स के लिए। जैसा मैंने बताया, बाकी स्टेट्स में भी हमारा प्रोग्राम ड्राफ्ट में है और अगले 3 से 4 महीने में, 5 महीने में प्रोग्राम उन स्टेट्स में भी आ जाएगा एम्पैनलमेंट के साथ, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या केरला, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा अगर आपको कोई बेनिफिट इंसेंटिव्स दे रही है तो वो जेम के साथ भी एप्लीकेबल है। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं। आपकी इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेरीज हैं तो वी वुड बी हैप्पी टू आंसर यू। आज रात को 12 बजे तक के लिए हमने अभी फीस रजिस्ट्रेशन की लिंक को ओपन रखा है। इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर जेम सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन, आप ये ट्रेनिंग और प्रोग्राम को के लिए आज रजिस्टर कर सकते हैं। आज अगर आप करते हैं तो आपको डिस्काउंटेड फीस पर रजिस्टर करेंगे, 3300 प्लस टैक्स। अगर आप आज की बात करते हैं तो 5000 रुपए प्लस टैक्स हो जाएगा। आज हमने रजिस्ट्रेशन को रात को 12 बजे तक के लिए ओपन रखा है। एक क्वेश्चन अभी अभी आया है कि क्या ये जेम सर्टिफाइड प्रोफेशनल अगर आप बन जाते हैं तो आप बाहर भी एक्सरसाइज करने के लिए एप्लीकेबल हैं क्या? यस, आप एप्लीकेबल हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री में अगर आप जेम सर्टिफाइड प्रोजेक्ट कर रहे हैं जेम सर्टिफिकेशन के लिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप जेम सर्टिफिकेशन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप जेम सर्टिफाइड प्रोफेशनल हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं किसी भी कंट्री में। आप पूरे 200 देशों के अंदर अगर आप किसी जेम सर्टिफिकेशन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप एप्लीकेबल हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कि आप इंडिया में अगर लीड का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको लीड सर्टिफाई होना चाहिए। आपको अगर आईजीबीसी का कर रहे हैं, आपको आईजीबीसी सर्टिफाई होना चाहिए। आप जेम का कर रहे हैं, आपको जेम सर्टिफाई होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए अमेरिका के अंदर आईजीबीसी सर्टिफिकेशन करते हैं, आपको आईजीबीसी सर्टिफाई होना चाहिए। आप अगर अमेरिका में जेम सर्टिफिकेशन करते हैं, आपको जेम सर्टिफाई होना चाहिए। इट्स समथिंग लाइक दैट। तो आप किसी भी इस प्रोजेक्ट को किसी भी कंट्री में कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि अगर आप जेम सर्टिफिकेशन में प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं तो आपको जेम सर्टिफाइड प्रोफेशनल होना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है ताकि आपको जेम के प्रोग्राम के बारे में मालूम हो, तभी आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो सर्टिफिकेट जो है वो इस बात की एलिजिबिलिटी है दैट नाउ यू आर एंटाइटल्ड टू एग्जीक्यूट एनी जेम सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट इन एनी पार्ट ऑफ द नेशन, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। इंसेंटिव्स जो है वो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के, जेम के, आईजीबीसी के, लीड के, गृह के, वो हर स्टेट के अलग अलग हैं, हर स्टेट में एप्लीकेबल हैं। तो स्टेट वाइज अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, बट द रिक्वायरमेंट इज दैट यू हैव टू बी जेम सर्टिफाइड प्रोफेशनल टू एग्जीक्यूट एनी काइंड ऑफ जेम सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट्स। अगर आपके पास जेम सर्टिफिकेशन में किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए कोई भी लीड है, यू कैन शेयर द लीड विद अस। मेरे से शुभा, अमित, रोहित, तरुण, हमारी लंबी छोटी टीम है, किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड वी विल हेल्प यू कन्वर्टिंग दैट प्रोजेक्ट फॉर यू। हम आपके लिए उस प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे अगर आप जेम सर्टिफिकेशन में प्रोजेक्ट्स को ला रहे हैं तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। अच्छा, आप अगर जब एग्जाम दे रहे हैं तो यू विल हैव टू गो थ्रू दिस जेम रेफरेंस गाइड। जेम रेफरेंस गाइड हमारी एसोचैम जेम की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप डाउनलोड कीजिए, आप पढ़िए, आप रजिस्टर आज कर लीजिए। आप एग्जाम कभी भी फ्यूचर में दे सकते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद कभी भी दे सकते हैं। आज रजिस्टर करने का बेनिफिट ये कि आज डिस्काउंटेड फीस है। आज आपको फीस में करीब 1800-2000 रुपए का फायदा हो जाएगा। बाद में आप देते हैं तो फीस कम ज्यादा होती रहती है, डिपेंडिंग अपॉन की मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेता है। दैट्स इट। सो अमित, आर फीस रजिस्ट्रेशन लिंक इज वर्किंग टिल टुनाइट 12 बजे तक। ओके, ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी भी करीब 350 से ऊपर कैंडिडेट्स इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। आप हमारे साथ लगभग 11, 11:30 बजे से जुड़े हैं। 2-2.5 घंटे हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया है। अमित ने दोबारा अभी ये लिंक शेयर किया आपके साथ, आप रजिस्टर कीजिए और जेम सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनिए। आपको करियर में कोई भी और हेल्प चाहिए सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, सो वी आर देयर टू हेल्प यू। वी ऑल आर सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स, एनर्जी ऑडिटर्स। तो आप अगर इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अच्छा लग रहा है कि आप 300-350 लोग हमारे साथ पिछले 2-3 घंटे से जुड़े हैं, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट आज के सेशन से होगा। अमित, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ये जो प्रेजेंटेशंस हैं हमारी सारी तीनों चारों, ये सारी प्रेजेंटेशंस आप हमारे सभी कैंडिडेट्स को शेयर करो। जो भी क्वेरीज आती हैं आप कंपाइल करो, और कंपाइल करके हम सारी क्वेरीज का 1-to-1 आंसर करेंगे। सो थैंक यू सो मच शुभा।
Thank you so much for your time and for your session. So thank you so much friends once again. हम लोग इस तरह के सेशंस हर सैटरडे को, हर लास्ट सैटरडे को, हर महीने के लास्ट सैटरडे को करते हैं. So I would request you all to please join us and spread the news among your friends. और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम दीजिए, प्रोफेशनल बनिए, अपना करियर बनाइए. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you very much. Thank you, everyone.